Good evening, everyone. I am Priya Bharti and I'll be your host for this session. It is my pleasure to introduce our mentor for today's session, Mr. Rupinder Singla. Sir, he is currently serving as a senior scene of crime officer in the Andaman and Nicobar Island. He has previously worked as a scientific assistant at FSL Nagpur and as an assistant of professor, a UGC NET or JRF qualified professional. His expertise include forensics biology, DNA profiling, toxicology, crime scene investigation, and cyber forensics. With experience in forensic laboratories, cyber investigation academies, and real world crime scene management, he brings both practical insight and professional expertise to today's session. Please join me in giving a warm welcome to Mr. Rupinder Singla. Sir, we are delighted to have you with us. Sir, the stage is yours. Thank you. Okay, thank you, Priya. So, good evening to everyone. First of all, am I audible to everyone? Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Okay, sir. okay, okay, okay. So, I think all of you are comfortable in Hindi or English. Am I right? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Okay, sir. okay. तो सेशन हमारा बाइलिंगुअल रहेगा. ओके, हिंदी भी रहेगा फॉर कन्वीनियंस एंड इंग्लिश भी रहेगा. ओके. So, in this internship, we are going to discuss about the DNA. The DNA, not about the basics of the not about the biology of the DNA, but how the DNA help in the forensic science. I think all are the students of BSc and MSc. Am I right? Any working professional? Any working professional here? Currently working as a scientific assistant or any on other post in FSL or RFSL or CFSL, state FSL? Anyone? Okay, okay, okay. सो अपने टॉपिक को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए सबसे पहले मैं कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहता हूँ, देन उसके बाद मैं अपना जो प्रेजेंटेशन उसको शेयर करूंगा. सो डीएनए क्या होता है? डीएनए बेसिकली क्या होता है? क्यों हम फॉरेंसिक में इसको यूज करते हैं? इसका इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों है फॉरेंसिक में? फॉरेंसिक एक बहुत बड़ी ब्रांच है, फॉरेंसिक साइंस. आई थिंक यू ऑल नो अबाउट द डेफिनेशन ऑफ द फॉरेंसिक साइंस, है ना? सभी को फॉरेंसिक साइंस की डेफिनेशन का पता है ना, क्या होती है? व्हाट इज द फॉरेंसिक साइंस? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फॉरेंसिक साइंस? एनीवन? एनीवन? हेजिटेट नहीं होना है सर, बिल्कुल भी, जस्ट जस्ट. बिकॉज हाँ. डीएनए सबसे यूनिक प्रॉपर्टी होती है और हम्म. हर जीन में होती है या फिर ब्लड में, उसके प्रिंटिंग निकालना इजी होता है, उसे डिटेक्ट करना क्रिमिनल को। ऐसा स्पेसिफिकली क्या होता है जो किसी और चीज में नहीं होता है? लाइक एनी अदर एविडेंस, ऐसा डीएनए Sorry में for ऐसा क्या होता है? interruption, sir. यस, Some श्योर. students facing problems in Hindi, so we can continue in ओके, English. ओके, 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 श्योर, 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 श्योर. ओके. Thank you, sir. So basically, what are the things in the DNA? So we are taking the DNA in the forensics. So what are the things that we are take in the consideration about the DNA? So DNA forensics is a very wide field, we can say. Okay. So DNA का अगर हम बच्चे some in between bilingual भी रहेगा. Okay. The section will be in bilingual stage both. Okay, for the convenience of the lecture, because in Hindi it will be more convenient for me also. Okay. At some stage, I will speak in Hindi. Okay, and at some stage, I will speak in English in both languages. Okay, sir. Is it okay? Is it okay to everyone? I think all are Indians. Am I right? Yes, sir. Okay, okay. So you know what the Hindi, English as well, and we know Hindi is our official language of our India. Okay, so you should know about the Hindi language too. Okay, so there are so many things in the forensic science which we take into consideration while we study the forensic science. So what is the basic definition of the forensic science? Anyone? Anyone? Good evening, sir.
Good evening. So, forensic science is the application of scientific methods and techniques to investigate the crime and assess the legal system. As well, it's helped to collect, analyze, and interpret the evidence to determine the facts of criminal and the civil cases. So, Okay, good, bache. So basically, forensic science is the application of the pure sciences. Okay, forensic science is not a pure science. It is the applied science. It is the application of the pure science. Am I right? So in forensics, we do not study the pure science like botany, geology, chemistry. Okay, chemistry are further divided into the organic, physical, and inorganic. But what in some instances, we should also know about the pure chemistry, pure biology, pure geology, pure botany. Okay, now DNA. Now, what is the structure of DNA? We will study one by one everything about the DNA from base to the we can say higher aspect of the DNA. Okay, so I am sharing my presentation here. Just wait a minute. Yes, is it visible to all? Is it Yes, sir. visible? Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay, good. So DNA is the blueprint of life, or what is the role of in forensics? DNA, why it is so called blueprint of life? Why it is so called? क्यों हम बोलते हैं it is a blueprint of life? Because DNA code for specific gene which always transfer from generation to the generation, and it we can say has all the type of information which we need. Okay, our body which need the information that all So your voice is we can not say clear. constitute into the DNA. Clear? So basically, now first of all, to understand the DNA in the forensic science, first of all, we have to understand the criminal justice system. So what is the criminal justice system? Basically, in a criminal justice system, there are three pillars. First is law enforcement agencies. Second is legal proceeding. And third is Sorry for interruption, sir. There is some net issue from your side. scientific So analysis, what and is third one voice is is not clear. uh, okay. I think there is some. Hello, am I audible? Yes, sir. Now it is okay. 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 The presentation is visible to all. Yes, sir. Okay, now I'm audible. Yes, sir. Okay, actually I'm in the Andaman Nicobar Island. Okay, so here is some little bit internet connection problem is there. So therefore you need, I think you will face some challenges while connecting to the internet. Okay. So we were discussing about the criminal justice system. So basically, in forensic science, we have three pillars. First is law enforcement agencies, second one is scientific analysis, and third is legal proceeding. So what is law enforcement? Law enforcement agencies are the police. Okay, any we can say different country has a different type of police. Okay, like a federal police. Now in India we have the police. So now we have the states. So state different type of police are there. Okay, so police play a very important role in the criminal justice system. Okay, so basically in forensic science we always deal with the crime scene. Okay, so where the crime scene occur, the police first of all the law enforcement agencies go there, and
the police will interrogate, we can say investigate the case. Okay, then after that, after the sampling, the crime scene पर क्या होता है कि the forensic play an important role. Okay, forensic क्या करते हैं कि while there is any crime scene, forensic will go to the crime scene and collect the exhibits which are relevant to the forensic science, and then will collect and then packed and then hand over to the police. Is it clear to all? Then after that, for the scientific analysis, the police will submit that samples to the forensic laboratories for the chemical analysis or scientific analysis, where the scientific analysis take occur. So बच्चे क्या होता है कि इन साइंटिफिक एनालिसिस द क्राइम सीन जो हमारे पास एग्जिबिट्स होते हैं, okay, the evidence which we collected from the crime scene will submitted to the forensic lab, and according to the division, like according to the need of the case, like if it is of DNA, if it is of biology, toxicology, then it is, or it is of any other division, so accordingly वो क्या होएगा, it will analyze that sample, then the report, the final report of the DNA, we can say of any sample, will submitted to the court, okay, for the further proceedings, for the legal proceedings such as in the court. Okay, so where the conviction of the of any offense, we can say verdict will of the offense will take place. जहाँ पे क्या होएगा, जज क्या करेगा, किसी भी केस की सुनवाई करेगा, आफ्टर दैट द अक्यूज्ड जो होएगा वो या तो कन्विक्ट होएगा, जो अक्यूज होएगा कन्विक्ट हो, या फिर उसको मीन वर्डिक्ट आएगा. ओके, सो दीज आर द थ्री पिलर्स ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम. These are the main pillars. Clear? So basically डीएनए फॉरेंसिक्स, हमें सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ डीएनए टाइपिंग को जानना पड़ेगा. डीएनए, नाउ व्हाट इज द फुल फॉर्म डीएनए? एनीवन, व्हाट इज द फुल फॉर्म डीएनए? Deoxyribonucleic acid. Deoxyribonucleic. Deoxyribonucleic acid. Okay, so why it is so called deoxy? Why it is Because so it called doesn't deoxy? have oxygen, sir, at Where? composition. Where? So you all know about the composition of the डीएनए. वैसे हम पढ़ेंगे, we will study later on. composition क्या होती है डीएनए की? The sugar plus nitrogenous base plus phosphate group. Okay. So sugar is the pentose sugar. Yeah, sugar is the pentose sugar. Okay. So pentose sugar means 5 carbon sugar is there. So on the second carbon, there is a loss of oxygen. That's why it is so called deoxyribonucleic acid. So DNA is very wide subject. अगर हम डीएनए की बात करें, एक बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है, बट in forensic we always study the DNA fingerprinting, okay, or DNA profiling, because DNA profiling play a very important role in the DNA forensic. So prior to start the DNA typing, DNA fingerprinting or DNA profiling, आप कुछ भी बोल सकते हो. First of all, we have to read about the history of the DNA profiling. Okay, so there was a person that is known as the person name was Alec Jeffreys in 1985, who invented some regions on the DNA, and that regions are known as VNTRs. So what are the VNTRs? These are the variable number of tandem repeats. Okay, so variable number of tandem repeats, these are the regions, or we can say markers, were present on the, we can say present on the DNA. Okay, so these are the large number of the nucleotide sequences which were invented by the Alex Jeffrey on the DNA. But these VNTRs are specific to every person, individual to individual. These VNTRs are specific. Okay, so with the help of the VNTRs, we have a technique that is known as RFLP, restriction fragment length polymorphism. So what is RFLP? Why it is so called RFLP, restriction fragment length polymorphism? So this is so called because we have to use some enzymes to cut the DNA from the specific site. Okay, so that's why it is known as the restriction fragment length polymorphism. Clear? After that, we have the STRs. Now, what are the STRs? These are the short tandem repeats. VNTRs क्या होते थे? बहुत ही ज़्यादा बड़े होते थे. Okay, VNTRs were very large. So to we can say reduce the limitation of that VNTRs, we introduce the STRs. STR are the short tandem repeats with the short number of nucleotide repeats. यहाँ पे क्या था कि जो STR थे उनका जो repeat था वो क्या हो जाता है, तो उसका जो रिपीट होता है ना, उसका जो साइज होता है वो छोटा हो जाता है. ओके, सो नाउ व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ डीएनए?
डीएनए के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? बेसिकली डीएनए हैज टू बेसिक प्रिंसिपल. फर्स्ट इज द ट्विन्स हैव द होल डीएनए इज सेम. अगर ट्विन्स होंगे तो उनका जो डीएनए होगा, होल डीएनए, वो क्या होगा? यूनिक होएगा. एंड द डीएनए ऑलवेज इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स. 50% will inherited from the father and 50% from the mother. Okay. Then after that there are so many applications of the DNA. Okay, using the VNTRs or using the STRs, there are so many types of the application are there. First, like parentage analysis, disaster victim identification, genetic genealogy, ancestry test, and historical and missing person investigation. Okay, अगर आपने कभी पढ़ा हो, अगर आपने कभी इंटर्नशिप की हो in any lab, okay, then you will must encounter any case of the like missing person identification. किसी कोई बंदा मिसिंग है, देन उसकी नोटि FIR हो गया है थाने में, एंड आफ्टर दैट हमें कोई डेड बॉडी मिली है अननोन, पर जो बॉडी हमें आइडेंटिफाई हुई है, देन बच्चे उसका क्या करते हैं? डीएनए एनालिसिस करते हैं. ओके, सो दीज आर द सम एप्लीकेशन ऑफ द डीएनए एनालिसिस. देयर आर द सम steps in the DNA processing, like biology, technology, and genetics. Now, what is the biology? What is the biology of the DNA? Okay, DNA की biology क्या होती है? So basically, जब सबसे पहले we have to extract the DNA from the sample. The sample which we have collected from the crime scene or any other material. Okay, so we have to first of all we have to extract the DNA from that sample. Then we have to quantify the DNA. So why we need to quantify the DNA? What is the DNA quantitation? So DNA quantitation is the method to measure the amount of DNA present in the sample. डीएनए क्वांटिटेशन हम इसलिए करते हैं कि उसमें उतनी अमाउंट में डीएनए प्रेजेंट है जितनी अमाउंट में हमें चाहिए फॉर द फर्दर डीएनए प्रोफाइलिंग. Okay, after the DNA quantitation we have PCR amplification. So what is the PCR? PCR is the polymerase chain reaction, where the number of multiple copies are, we can say, in क्या बोले कि हम उसको कि multiple copies बनेगी जहाँ पे जाकर के PCR के थ्रू. ओके, जो हमारा स्पेसिफिक मार्कर होएगा, द स्पेसिफिक मार्कर ऑफ द डीएनए विल लाइक वी हैव टू, जो बच्चे स्पेसिफिक मार्कर होंगे वो क्या होंगे? उसके मल्टीपल कॉपीज बन जाएंगी. ओके, आफ्टर दैट वी हैव अ टेक्नोलॉजी. इन टेक्नोलॉजी वी विल सेपरेट द पीसीआर प्रोडक्ट. जो पीसीआर प्रोडक्ट जो हमारा बनेगा, देन वी हैव टू सेपरेट एंड डिटेक्ट दैट पीसीआर प्रोडक्ट इन द एक टेक्निक होती है बच्चे, उसमें हम बोलते हैं उसको हम जेनेटिक एनालाइजर. एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसमें हम क्या करेंगे? उसको सेपरेट करेंगे. ओके, आफ्टर दैट सैंपल जीनोटाइप पढ़ेंगे. सैंपल जीनोटाइप वी हैव टू मेक द स्टडी द होल द जीनोटाइप ऑफ द डीएनए. After that, we have to study the genetics. In genetics, actually, we have to ascertain the profile of the that we can say DNA profile. हमें डीएनए जो प्रोफाइल बनेगी उसको हम असर्टन करेंगे, एंड फिर उसके बाद वी हैव टू मेक द कंक्लूजन, लाइक इट विल बी द इंक्लूजन, एक्सक्लूजन और इनकंक्लूसिव. ओके, वी विल रीड वन बाय वन एवरी स्टेप. So this is the some we can say some diagrammatic view of the DNA comparison. कैसे हम करते हैं? First of all, just have a look on this left side column, this one. पहले हमने क्राइम हुआ. ओके, फ्रॉम क्राइम सीन वी हैव टू कलेक्ट द एविडेंस. आफ्टर दैट वी हैव टू go with the some processes, some steps of the DNA such as collection, sample storage, characterization, then extraction, quantitation, amplification, STR marker, then separation, detection, then data interpretation, and then statistical interpretation. Okay, on the right side we have the reference sample. Reference sample किसके होएंगे? Like of brother, father and mother. Okay, so reference sample लेंगे, and after that we have to go with the same process like extraction, quantification, amplification, STR markers, separation, detection, and data interpretation. Okay, then we have to compare the two profile with each other. After comparing these two profile, we have to go to the result such as inclusion, exclusion, or inconclusive. Is it clear to all? Hello. Yes, sir. So बच्चे this is the some we can say एक डेमो है लेबोरेटरी रिपोर्ट का. So in a laboratory report,
आप किसी भी डिवीजन में काम करो, लाइक यू आर वर्किंग इन टॉक्सिकोलॉजी, इफ यू आर वर्किंग इन डीएनए डिवीजन, if you are working biology division, so there is a some laboratory report is there. Okay, this is the demo report of the FSL report. Okay, so उसमें क्या क्या होगा? So the report will contain the first of all the laboratory name, कौन सी लेबोरेटरी है वो, कौन सी FSL है. Okay, then date, after that the examiner name, then after that the unit of DNA, unit of the division, कौन सी डिवीजन का हुआ है, कि लाइक फॉरेंसिक बायोलॉजी का है, फॉरेंसिक डीएनए का है, टॉक्सिकोलॉजी का है. आफ्टर दैट द क्वेश्चंस, or we can see the exhibits which we have. Okay, question 1, Q1, K2 or K2. Okay, Q1, Q2 or K2, K1. Okay, then we have the profile. This is the genetic profile. This is the genetic profile. Here one is the Q1 or Q2. These are the two sample, question sample, and K1 and K2 are the known samples. Clear? Now come on the main topic, that is the basics of the DNA principles. So what are the principles of DNA? First of all, DNA कहाँ पे होता है? Where we found the DNA in the cell. Okay, कहाँ पे होता है सेल में, कहाँ पे होता है डीएनए? What is the position of the DNA in the cell? So it is found in the nucleus of the cell. Okay, nucleus. Nucleus में कैसे होता है? How it is present in the nucleus? double stranded. Okay, डबल स्टैंडर्ड की फॉर्म में होता है डीएनए. No, sir, in the form of chromosomes, sir. Anyone else? How DNA is present in the nucleus? Sir, it is organized into chromosome. Okay, okay. So बच्चे first of all come with the some basic principles of the biology. Okay, so जो हमारी बॉडी है, a human body is made up of multiple cells. है ना, सभी को पता होगा कि हमारी जो बॉडी है वो कई सारे सेल से मिलकर बनी है. सो अ सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. A single zygote is a product of fertilization. Single zygote से क्या माना गया, एक फुल ऑर्गेनिज्म बनता है. A single zygote is a itself a cell. Okay, after the division like a mitosis, meiosis, so these are the some we can say क्या बोलेंगे इसको, डिविजन्स होती हैं. ओके, माइटोटिक डिवीजन होती है, मियोटिक डिविजन्स होती है, जिसमें क्या होता है, जो जायगोट डिवाइड होता है into different cells. After that, zygote will form into the embryo, then blastula, gastrula. The different type of stages are there. Finally, a product of conception will form, that is the fetus. Okay, fetus बनता है. fetus किसको बोलेंगे? which have fully fleshed arms, feet, which full जो बच्चे बॉडी के ऑर्गन बन जाते हैं, then उसका हम क्या बोलते हैं? fetus बोलते हैं. So the zygote, a single cell contain a DNA. So DNA वो किसका होएगा? It will obviously it will of 50% from father and 50% from the mother. ओके, सो बच्चे उनका आपस में क्या होता है? रिकम्बिनेंट डीएनए बनता है. आफ्टर दैट अ सिंगल सेल इज फॉर्म्ड एंड अ न्यू ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म्ड. ओके, सो डीएनए ऑलवेज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस. Okay, DNA is two type. One is the nuclear DNA, second is the extranuclear DNA. Now, what is the nuclear DNA? Nuclear DNA is that DNA which is present in the nucleus of the cell, and extranuclear DNA is that DNA which is present outside the nucleus of the cell, such as mitochondria, such as in plant cell. If we talk about the plant cell, such as chloroplast. Okay, so इनमें क्या होता है? Extra nuclear DNA present होता है. So डीएनए कंटेन होल इंफॉर्मेशन ऑफ आवर लाइफ. जैसे ही एक जायगोट बनता है, देन इट विल कंटेन द होल इंफॉर्मेशन. ओके, सारी जितनी अपनी लाइफ होती है बचपन से लेके बड़े होने तक की, सो इट विल कंटेन होल द इंफॉर्मेशन. ओके, सो द होल इंफॉर्मेशन इज कंपोज्ड इनटू अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस. So that set of instructions are known as, is called, not known as, is called genome. So which genome is the complete set of instructions. Okay, then that information always stored into the small fragments, small monomers, and that monomers are known as the nucleotides, and that nucleotides will assemble into the genes, and that genes are present on the chromosomes. Okay, is it clear to everyone? So basically क्या होता है,
जो सेल होएगा ना, सेल में न्यूक्लियस होएगा, न्यूक्लियस में जो डीएनए होता है ना तो वो क्रोमोसोम की फॉर्म में होता है और ना ही वो इसमें वी कैन से कॉम्पैक्ट फॉर्म में होता है। दैट डीएनए ऑलवेज प्रेजेंट इन क्रोमेटेड फॉर्म्स। ओके, एक द लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस एंड दैट इज द डीएनए। When there is a meiosis, so we can say reductional division take place of the cell, then it will we can say किसकी फॉर्म में आ जाएगा वो, it will come into the form of chromosomes. Okay, so basically there are two main purpose of the DNA. First of all, to make copies of itself to carry the information. Second, to carry instructions on how to make proteins so can build and maintain the machinery of life. Clear? So now come on the next topic, that is central dogma. Now what is central dogma? Anyone? Central dogma क्या होता है? Anyone? What is central dogma? Have you heard about this term prior to this? Central dogma. Any student? Anyone? डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन। Okay. 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 Then एक बच्चे एक मेथड मिस है इसमें. One step is missing here. Genetic information within a living cell. Okay. Anyone else? Anyone else? Sir, it's the flow of a genetic information from DNA to RNA and RNA to protein, sir. हाँ, ओके ओके, ठीक है. सो बच्चे सेंट्रल सॉरी, so central dogma is the flow of the, we can say, information from DNA to RNA, RNA to the RNA into the protein. Okay, so इसमें एक चीज मिसिंग है, दैट इज द रेप्लिकेशन ऑफ द डीएनए. ऐसा नहीं है कि डीएनए डायरेक्ट ही एक एमआरएनए बनाएगा. नो, फर्स्ट ऑफ ऑल sorry, first of all, the existing DNA will replicate to itself and it will form a mRNA, and that process is known as transcription. The formation of RNA from DNA is called transcription. And the formation of RNA from DNA, mRNA, we can say mRNA, just wait. So from RNA, the proteins will form, and the formation of protein from mRNA to the protein, that is known as translation. So here the translation, बच्चे, this is the step here जहाँ पे क्या होएगा, सारी जो information है, the all the coding information will translate into the some, we can say, compact form in the 3D form, that is known as the proteins. Now proteins are जितनी हमारी बॉडी में enzymes है, ओके, जितनी बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रही है, एंड ऑल द बायोकेमिकल कैटलिस्ट आर देयर प्रेजेंट इन आवर बॉडी are all the proteins. Okay, all the enzymes are the proteins. Is it clear to all? So now we are going to the next topic, that is structure of DNA. So structure of DNA में क्या क्या होता है बच्चे? फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूक्लियर बेस होएगा, और वी कैन से नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं इसमें. सेकंड शुगर, थर्ड इज फॉस्फेट. Okay, so there are two type of nucleic acid are present. One is the DNA, second is the RNA. RNA is the ribonucleic acid and DNA is the deoxyribonucleic acid. And these both nucleic acids, DNA and RNA, are the polymers. Okay, are the polymers. These are made up of the some monomers. मोनोमर्स जुड़ते हैं, मोनोमर्स पहले एड अप होते हैं, आफ्टर दैट द मोनोमर्स will form a long chain that is known as the DNA or RNA. Okay, so now we are discussing about the DNA, so we will just focus on only on the DNA. First of all, just wait, पहले यहाँ पे देखो आप. Yes, on this slide. So nucleic acid are the polymer of the nucleotides. Okay, so there are two type of strands are there. One is the 3 to 5 end and 5 to 3 end. Now what is this 3 to 5 and 5 to 3 end? क्या होता है ये? 3 क्या होता है और 5 क्या होता है? What are these positions indicating? Anyone? What is the 3 or 5 or 5 to 3? जो हम बोलते हैं these कि DNA is the double stranded DNA with the two strands of the DNA run anti-parallel to each other,
Okay, these are the some basic principles, or we can say some basic definitions of the DNA, है ना? So बच्चे, what are these? 3 to 5, 5 to 3, क्या होते हैं? Sir, Anyone? 5 ends is like having the free phosphate group that attached to a fifth carbon of the sugar, and the three Good. ends has a free hydroxy group attached to the third carbon of the sugar, sir. Good, good, good. So the connecting link is the sugar. Okay. One side, one side क्या होएगा? You can see here the in the diagram. So this is the sugar. This is the 5 member ring sugar. Okay. इसकी जो फर्स्ट कार्बन यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस होएगा, एंड द फिफ्थ कार्बन इट विल हैव द फॉस्फेट ग्रुप ऑन द थर्ड कार्बन इट अगेन हैज अ फॉस्फेट ग्रुप. Okay, so it will form a phosphodiester bond. Okay, there are two type of bonds are there in the DNA. One is the phosphodiester bond, second is the glycosidic bond. Okay, the bond formation, the bond in between the phosphate and the carbon, that is the phosphodiester bond. Okay, diester bond बनता है. Diester, I think if you are any one of the chemistry background, okay, then you will know about the phosphodiester bond. What is the diester bond? And one is the glycosidic bond, the bond between the carbon carbon bond. Okay, that is the glycosidic bond. So the it will form a backbone, phosphate sugar backbone बनती है. Okay, like this 5 to 3 and 3 to 5 end. But these are the anti-parallel to each other. Okay, so this is the one unit. This is the one unit. Okay, so this is the one nucleotide of the DNA. Now, what is the nucleotide? बच्चे basically क्या होता है? The base plus sugar is called nucleoside. Base कौन से होंगे? What are the base here? That is nitrogenous bases. Okay. Second, sugar is the pentose sugar, means ribose sugar. Base plus sugar is the nucleoside, and nucleoside plus phosphate is the nucleotide. So we can say that a phosphatized nucleoside is the nucleotide. So what is the nucleotide? Nucleotide is the phosphatized nucleoside. Okay. बहुत सारे बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होती है कि what is the nucleotide, how we can define the nucleotide. So you can define nucleotide as it is the phosphatized nucleoside. Okay, so there are different type of nucleobases, or we can say nitrogenous bases are there, and all are the aromatic heterocyclic components. Okay, there are two types. One are the purines, second are the pyrimidines. One, purines are the 9 member ring structures. Okay, always running in anti-clockwise. Okay, so purines is the 9 member ring. So one is the adenine, second is the guanine. सो इसके पीछे एक ट्रिक है याद रखने का. एडिनाइन, इसके पीछे क्या आ रहा है? नाम के पीछे 9. ओके, एंड गुआनाइन अगेन 9. सो इट इज द प्यूरिन्स. प्यूरिन मींस 9 member ring. ओके, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एडिनाइन एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ गुआनाइन. ओके, इसको याद रखना आपका जरूरी है बच्चे. आप यू हैव टू रिमेंबर दीज स्ट्रक्चर्स. ओके, then pyrimidines. Pyrimidine is the 6 member ring structure and always numbered in the clockwise direction. There are the three types of pyrimidines are there. One is the cytosine, thiamine, and uracil. Okay, so anyone, कौन कौन सी नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट होते हैं इन डीएनए? Sir, Which nitrogenous bases are present? Yes. adenine, guanine, cytosine, and thymine. Okay, then what is the role of uracil? So uracil is present in RNA, not in DNA. Okay, at the place of. So thymine. Okay, so uracil always present in the RNA at the place of thiamine. Okay, is it clear to everyone? So sugars of the nucleic, first now next we are discussing about the sugars of the nucleic acids. Okay, so nucleic sugar क्या है? Pento 5 member ring structure होती है, that is the pentose sugar, and this is the deoxyribose sugar. Okay, deoxyribose sugar. Here you can see here that the second बच्चे right side of the has structure. Here the second carbon we have the oxygen. So we do not have oxygen here. Okay, only hydrogen are there. But in ribose sugar, in only ribose sugar, here is the oxygen is present on the second carbon. Okay, so deoxyribose, D2 deoxyribose, D2, 2 means on second carbon there is a loss of oxygen. Next is phosphate group. The phosphate group is the phosphoric acid. Okay, it is nothing but it is the phosphoric acid. That is the formula is H3PO4.
ओके, सो फॉस्फोरिक एसिड जैसे उसमें से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा देन इट विल फॉर्म है फॉस्फेट। ओके, जैसे नेगेटिव चार्ज उसके ऊपर आएगा बच्चे इट विल बिकम अ फॉस्फेट ग्रुप। ओके, H3PO नेगेटिव मींस ये क्या बन जाएगा, PO4 नेगेटिव हो जाएगा फॉस्फेट, सॉरी नॉट H3PO4 नेगेटिव, 3 नेगेटिव हो जाएगा देन इट विल फॉर्म अ फॉस्फेट ग्रुप। ओके, देन हियर द binding on the nucleoside. So बच्चे purines will bind to from 1 to 9 and pyrimidines are 1 to 6. Okay, according to their number of the chain. So pentose sugar. So pentose sugar are bind to the nitrogen base by the beta N glycosidic bond. Okay, कौन सा बॉन्ड होता है इसमें, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है इन पेंटोस शुगर। पेंटोस शुगर कंटेन द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बिटवीन द नाइट्रोजन बेस एंड द राइबोस शुगर। You can see here. This is the first one is the AMP. AMP means adenine monophosphate. And second is the thiamine. Thiamine is the thiamine monophosphate. So बच्चे चार्गस रूल क्या होता है? What is चार्गस रूल? Anyone? ओके छोड़ो ये। एडेनाइन किससे जुड़ा होता है? इन डीएनए इन डीएनए एडेनाइन इज कनेक्टेड टू विद सेकंड न्यूक्लियोस जो नाइट्रोजन बेस होगा, किससे जुड़ा होगा वो? एनीवन? Thaiman. थायमाइन एंड guanine टू So Cystosin. Cytosine. एनीवन? Cytosin. हाँ Cytosin. cytosine. Okay, so बच्चे this is the I here in the diagram I am representing here the one bonding which is the adenine monophosphate and thiamine monophosphate. Okay, एक साइड पे इसका 3 एंड होएगा और 5 एंड होएगा, दूसरी साइड पे it will run through the 5 to the 3 end. Okay, so this is the adenine here and this is the thiamine. Here is the phosphate group present and here the ribose sugar is present here. Okay, सो ऐसी इसकी बॉन्डिंग होती है एंड आफ्टर दैट इट विल फॉर्म अ लॉन्ग चेन पॉलीमर बनाता है एंड इट विल फॉर्म अ कंप्लीट डीएनए मॉलिक्यूल। क्लियर? सो N9 मींस जो नाइट्रोजन होएगा N9 ऑफ द एडेनाइन will form a bond between to the C1 of the pentose sugar to form a covalent bond in the nucleoside. Okay, so in pyrimidines, the binding between the N1 of the pyrimidine and N1 C1 of the pentose sugar. Okay, and the OH hydroxyl group जो होएगा hydroxyl group of the AMP that is adenine monophosphate nucleoside esterified with the phosphate group to produce the 5 or 3 end. Okay, कोई भी एक end बनेगा, it will form a 5 end or it will form a 3 end. Okay, so this is the whole structure of the DNA. You can see here that this is the phosphate group. Phosphate group is attached to the fifth carbon of the pentose sugar. Here is the nitrogen bases are present here, and here the 3 carbon. Okay, 5 to 3 जा रहा है, इसका एंटी पैरेलल क्या होगा? It will run in the opposite direction. If this is run in the 5 to 3 direction, the opposite strand will run in the 3 to 5 direction. Clear? So now what is the Chargaff? So Chargaff was a scientist who described the amount of nitrogen bases present in the DNA. So he explained about the concentration of the AT and GC, okay, quantitatively. Erwin Chargaff in 1940 quantitatively analyzed the nitrogenous hydrolysates from different species. Okay, different species से DNA को extract किया गया. After the extraction of DNA from the different species, it will we can say quantitatively analyzed. Okay, so he observed that all the species have an equal number of the A and T residue and equal number of G and C residue. Okay, आप पढ़ते होंगे अगर आपने कभी पढ़ा हो इसके बारे में, that is AT is equal to GC. Okay, so A and T has a double bond. A भी आपको पता होगा, the adenine thiamine is connected through the double bond and the C and G, guanine and cytosine have the triple bond. Okay, कौन से bond होते हैं? The bond is the hydrogen bond are there in between the two nitrogen bases. One is the adenine, second thiamine, and next is guanine and cytosine. Okay, so this is called Chargaff rule of the molar equivalence between the purines and pyrimidines. Clear? So this is the basic biology of the DNA. Okay, अगर आप फॉरेंसिक में पढ़ रहे हो डीएनए ना, इफ यू आर स्टडी द डीएनए इन द फॉरेंसिक साइंस देन यू शुड नो ऑफ द बेसिक्स ऑफ द डीएनए कि डीएनए क्या होता है, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, हाउ डीएनए बाइंड इटसेल्फ.
Okay, so next is the a very famous model of the DNA, that is the right double-stranded DNA. We can say double helical structure of the DNA, explained by the Watson and Crick. Okay, and also known as the Watson and Crick model of the DNA. Okay, so here the very famous model of the DNA were proposed by the two scientists were named as Watson and Crick. Okay, in 1953, and they got the Nobel Prize in 1962 about this. And there are some salient features of the DNA. First salient feature is the कि DNA is the right-handed structure of the DNA. जैसे ladder होते हैं ना, which is right-handed, we can say twist होता है उसका, and the DNA is same like that of ladder. Okay, the DNA is a right-handed double helical structure consists of two polydeoxyribonucleotide chains twisted around each other. Two strands are run anti-parallel to each other. Okay, so the width between the double helix structure is 20 angstrom, or we can say 2 nanometer. अगर आप देखो ना, ये the distance between two strands is the 2 angstrom. Okay, and the distance between the we can say two nucleotides is the 0.34 nanometer. Okay, and the distance of, we can say, and the length of, no distance, and the length of the one helix is the one twist, जहाँ पे एक twist बनेगा ना, that will of 3.4 nanometer. Okay, there are two type of groups are there. One is the major group, second is the minor group. Each term of the helix is 34 angstrom, that is the 3.4 nanometer, with a 10 base pair of the nucleotide. Okay, हर एक ट्विस्ट में उसके कितने बेस पेयर होंगे, हाउ मेनी बेस पेयर आर देयर इन द ट्विस्ट ऑफ द, वी कैन से हेलिक्स ऑफ द डीएनए, 10 base pair are there. Okay, the distance between the base pair is 3.4 angstrom. Angstrom is the unit of, okay, जिसमें उन्होंने कैलकुलेट किया था. The two strands are held together by the hydrogen bond formed by the complementary base pairs. That is the A and T double bond से connected होते हैं, G and connected through the triple bond. According to Chargaff rule, the content of the A is equal to the T and content of the G is equal to the C. Okay, this was all about the Watson and Crick model of the DNA. Clear? So this is the whole structure of the DNA. 20 angstrom, minor group, okay, and the one spiral structure, okay, 3.34 angstrom, base pair are there, only 10 base pair are there, okay, sugar phosphate backward banegi, okay, so this is the some beautiful diagram of DNA is there. Okay, nitrogen bonds are base pair are there, held together by the hydrogen bond. A and T held together by a double bond, and G and C are with the help of triple bonds are there. Okay, so there are different type of DNA also, like bDNA, zDNA or aDNA. Okay, so DNA की types हम कैसे explain करेंगे? How we can explain the types of DNA? On the basis of structural form and on the basis of their cellular location. Structural form जैसे कि the double helix structure of the DNA exists in the at least six form में होता है double helix structure, that the उसमें से तीन सबसे ज्यादा famous है बच्चे, B, A and Z are the most important. B is the predominant and other one are the C, D and E DNA are different form in that appear in specific ionic condition. Okay, अगर आप pH किसी का change कर दोगे ना, the DNA like a different form of DNA are nothing but it will form a different type of DNA in the different ionic conditions. If you change the pH of the solution and after the extraction of DNA, if you put the DNA in different pH condition, it will come to different forms. उस किसी में क्या हो जाएगा कि DNA काफी compress हो जाएगा, किसी में बच्चे compress we can say shrink हो जाएगा, size छोटा हो जाएगा, and in some pH condition it will show some acidic nature, it will show some basic nature. So according to that, the structure form of DNA are explained. Okay, and on the basis of the cellular location, there are two type of DNA already discussed. One is the nuclear DNA and second one is the mitochondrial DNA. Nuclear DNA located in the cell's nucleus and packed in the 22 pair of the autosomal chromosomes are there, and one is the sex chromosome is there. Okay, 22 कौन से chromosome होंगे, autosomal होंगे, and one is the sex chromosome. Okay, and according to the sex chromosome, male है female है, okay बच्चे, and there are some we can say genetic malfunctions are also there,
लाइक पोलीगेमी हो जाता है, ओके, ट्राइसोमी हो जाता है। सो दिस देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ वी कैन से जेनेटिक एब्रेशंस आर आल्सो देयर। नेक्स्ट is mitochondrial DNA. Mitochondrial DNA क्या होता है कि फाउंड इन द माइटोकॉन्ड्रिया, इनहेरिटेड फ्रॉम द मदर। ओके, सो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द फोरेंसिक साइंस। If you have a DNA in a degraded form, if you have nuclear DNA in the degraded form, and you can't extract the DNA in that amount which you should need, okay, then you can go to the mitochondrial DNA. अगर आपने maternal lineage को पता करना है, then you should must go with the maternal mitochondrial DNA, okay, because it always inherited from the mother to her offsprings. Clear? So there are different type of DNA which are basic, or we can say most important DNA are there: bDNA, aDNA, and zDNA. So bDNA is the right-handed structure, helix structure, and present in the predominant form, commonly found and 10 base pair, and the width between the is the this is the basic. So we can say Watson Crick model जो जिसने explain किया था, that is the bDNA. Okay, then aDNA. aDNA is the right-handed, again helix structure, contain 11 base pair per turn. ओके, द जो डीएनए का टिल्ट होएगा ना बच्चे, इट विल टिल्ट एट द 20 डिग्री फ्रॉम द सेंट्रल एक्सिस। ओके, मींस टिल्ट होएगा फ्रॉम द 20 डिग्री, ओके, फ्रॉम द सेंट्रल एक्सिस। एंड कैसे बनेगा ये? इट विल फॉर्म इन द लो वाटर कंटेंट, मींस हाई ह्यूमिडिटी, हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ओके, सो ये किस में काम करते हैं मोस्टली? दिस ए एंड जेड डीएनए ऑलवेज यूज्ड इन द रिसर्च वर्क, ओके, नॉट इन द फोरेंसिक। Next is ZDNA. ZDNA, the left-handed DNA, contain 12 base pair per turn. The polynucleotide strand of the DNA move in a zigzag fashion. Okay, zigzag fashion में होगा, and it will contain the GC rich region. इसमें GC rich region होगा. Okay, and found near gene regulatory region, play a role in the gene regulation, transcription, and genome stability. Okay, so these are the different type of DNA. अगर आपने इसका और एक्स्ट्रा पढ़ने बच्चे, देन काफी बुक्स है इसकी डीएनए की, लाइक ट्रूमैन है। ओके, आप उसके बारे में उसमें जाकर के आप पढ़ सकते हो इसके बारे में, ओके, एक्स्ट्रा। सो हाउ डीएनए इज प्रेजेंट इन द सेल? ओके, डीएनए कैसे होता है? देयर आर टू टाइप ऑफ सेल्स आर देयर, वन इज द प्रोकैरियोटिक सेल एंड सेकंड द यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल कौन सा होता है? व्हाट इज द प्रोकैरियोटिक सेल? प्रोकैरियोटिक सेल कौन सा होता है? एनीवन? Sir, it's a prokaryotic cell is simply we can say a single-celled organism that does not have a true nucleus or a membrane-bound organelle. Sir. Okay, good. So prokaryotic cells are the cells which are the bacterial cells. ओके, बैक्टीरियल जो होते हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स जो जितने भी अपने मींस लिविंग ऑर्गेनिजम्स में दो आते हैं, वन इज द प्रोकैरियोटिक सेल, सेकंड आती है यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक हम यू क्यों बोलते हैं? दिस इज द ट्रू ऑर्गेनिजम्स जिसमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिज होंगी, प्रॉपर पैक्ड न्यूक्लियस इज देयर। Okay, in prokaryotic cell there is no distinct nucleus is there. DNA is loosely packed. Okay, and in eukaryotic cell DNA is found in the association with the some basic proteins, and that proteins are known as histone proteins. Okay, in eukaryotic cells DNA is not always present in the form of chromosome, not always form in the genes. When there is the cell is in the inactive condition, जब डीएनए सॉरी जो सेल होएगा ना inactive condition में रहेगा, डीएनए always present in the compact form, and that form is known as nucleosome. So nucleosome क्या होता है? There are some proteins which are positively charged that are known as histones, and DNA is the itself is the negatively charged. So DNA will bind to the histone protein and form a very large structure, compact structure, that is known as the nucleosome. So nucleotome in turn coiled to produce a chromatin material in which a DNA is present in the structure called chromosomes. Okay, so which chromosome आर नॉट ऑलवेज प्रेजेंट इन दी डबल स्टैंडर्ड। जो आप देखते हो ना कि डबल डबल शेप होते हैं, क्रोमोसोम्स आर डबल शेप, वैसे नहीं होते। वो कब आते हैं डबल शेप? व्हेन देयर इज अ डिवीजन लाइक मियोसिस, माइटोसिस। ओके, अदरवाइज chromatin material always present in a single stranded form, in a compact form, okay, like this. So
here first of all in this, but this is the animal cell. Okay, animal cell, it will contain different type of cell organelles, and in between the nucleus is there. So nucleus में क्या होते हैं, कॉम्पैक्ट फॉर्म में क्या पड़े होते हैं अपने, क्रोमेटिन पड़ा होता है। क्रोमेटिन when it will come in the form of chromosome, chromosome अगर हम खोल के देखें ना, it will form a DNA like this. Okay, ऐसे डीएनए पड़ा होता है, and it will like coiled form में पड़ा होता है। Okay, like this. So these are the histone proteins जो आप देख रहे हो ना, ज्यादा न्यूक्लियस ऑफ डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर 2 नैनोमीटर, ऐसे बच्चे क्वाइल बन के ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ हिस्टोन प्रोटीन आर देयर, एंड इट विल, बिकॉज डीएनए इज अ वेरी लार्ज पॉलीमर। ओके, इट इज नॉट अ स्मॉल स्ट्रक्चर। अगर आप देखो थ्रेड लाइक, अगर इफ यू वर्क इन द डीएनए लैब, if you have extracted the DNA anytime in the lab, so the DNA is a thread like structure. Extracted DNA कभी देखना आप कि बच्चे DNA is a thread like structure. ओके, अगर आप एम्पल अमाउंट ऑफ डीएनए एक्सट्रैक्ट करोगे तभी आपको विजिबल रहेगा, अदरवाइज इट इज माइक्रोस्कोपिक। ओके, so this is nucleosome. Nucleosome 6 to 8 nucleosome per term is there, and it will form a solenoid structure. Okay, then it will like we can say chromatin. Chromatin, it will comprise to the chromosome. Okay, so chromosome contain different type of genes which regulate our all the functions, और like body का कलर को कंट्रोल करेंगे जीन्स, हाइट को कंट्रोल करेंगे। ओके, डिफरेंट टाइप ऑफ वी कैन से ट्रेड्स को कंट्रोल करते हैं, दैट आर दी जीन्स। ओके, सो जीन्स की एक और फॉर्म होती है, दैट आर दी अलील्स। ओके, सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अलील एंड जीन? अलील क्या होता है एंड व्हाट इज द जीन? एनीवन, किसी को पता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द जीन्स एंड अलील्स? एनीवन? एनीवन प्लीज, यस और नो? Am I audible to everyone? Yes, sir. Yes, sir. Sir, gene is a basic units of hereditary, sir, and the alleles is a one form of the different version of the same gene found at the same position like a chromosome, sir. Okay. Have you heard about the dominant or recessive allele? Dominant और recessive allele, एक dominant होता है, एक recessive होता है। Yes, Okay. sir. Sir, Yes, sir. yes. Yes. Sir, dominant allele is said when one more copy of the same allele is present, then it is called dominant allele. Okay. So basically, it is a part of genetics. Okay. Now we are going to the next section of this presentation, that is the human genetics. Okay. If you, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ कि if you are studying the DNA forensic, you must know about the basics of the DNA. You must know about the basics of the human genetics. ओके, अगर आपको इसका नॉलेज है देन ही आप डीएनए फॉरेंसिक को समझ पाओगे, अदरवाइज यू विल फेस सम डिफिकल्टीज। ओके, सो बेसिकली जीन्स एंड अलील्स आर द सेम। allele is the next we can say different version of the gene, but when there are the two gene, sorry, when there are the two alleles, okay, अगर वहां पे दो alleles हैं तभी वो एक जीन बनेगा। ओके, अब बचपन में सॉरी, अब 12th या 10th क्लास में ये कुछ करते थे। आई थिंक यू मस्ट ड्रॉ द बोनो हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस, Yes, कभी sir. बनाया है आपने बोनो Yes, हाइब्रिड sir. क्रॉस? Yes, sir. So here we are going to describe here the tall dwarfness, then again tall and dwarfness. So tall is always denoted by the capital T, and dwarfness always denoted by the small t. And here one is the capital T, second is the small t. So which when this capital T, this only one capital T is the allele, and this small t is the allele. When these two combined, it will become a gene. जब बच्चे कंबाइन हो जाते हैं तो जीन बन जाता है, एंड व्हेन दी जाता है सेग्रीगेटेड, मैंने प्रेजेंट सेग्रीगेटेड कंडीशन, यस, सो दीज आर द अलील्स। अभी समझाया, दिस इज द डोमिनेंट, दिस इज द डोमिनेंट अलील, दिस इज द रिसेसिव अलील। कैपिटल टी इज डोमिनेंट अलील एंड दिस इज द रिसेसिव अलील। व्हेन बोथ कंबाइंड, व्हेन दोनों का बच्चे कॉम्बिनेशन होएगा, देन इट विल फॉर्म अ जीन, ओके, दैट विल कंट्रोल आवर ट्रेट। ओके, जो हाइट को करेगा, लाइक और डोमिनेंट ऑलवेज शो इट्स इफेक्ट एंड रिसेसिव शो इट्स इफेक्ट व्हेन बोथ आर द रिसेसिव alleles are there.
ओके, जब दोनों ही रिसेसिव होंगे देन इट विल शो द रिसेसिव अलील, अपना जो ट्रेड कौन सा शो करेगा, व्हेन बोथ आर प्रेजेंट इन द रिसेसिव कंडीशन। if there is or if there is a one dominant allele is there, अगर बच्चे वहां पे डोमिनेंट अलील है चाहे किसी भी कंडीशन में हो, देन इट विल शो ऑलवेज शो अ डोमिनेंट कैरेक्टर। okay, the phenotypic ratio will be 3:1 because 3 because here is the dominant allele is present here, okay, and genotypic ratio will be 1:1, okay. So we are going to this part now. What is the human genetics? Now what is the genetics? Genetics क्या होता है? Genetics is basically the study of genes. Okay, study of the genotype, study of the phenotype is all these all come under the part that is the genetics. So genetics is the study of heredity. Heredity क्या होती है? What is heredity? In very simple language, अगर हम layman language में बात करें, if we are talking about a layman language, बच्चे a simple हिंदी word that is विरासत। विरासत पता है सभी को क्या होता है? What is विरासत? इतना तो पता होगा ना, सभी इंडियंस हो, इतनी भी अंग्रेज मत बोलो, जस्ट किडिंग। Yes, sir. व्हाट इज विरासत? विरासत क्या होती है? मूवीज में देखा होगा, ऑलवेज हिंदी मूवीज में एक डायलॉग होता है, देयर इज अ डायलॉग इन हिंदी मूवी, ये मुझे अपनी विरासत में मिला है ना? व्हाट इज विरासत? जो अपने पेरेंट्स या उनसे मिली होती है कोई चीज। सो दैट इज द विरासत। ओके, सो जीन्स क्या होते हैं? व्हाट आर द जीन्स विच विल टेक फ्रॉम द विरासत, जो हमने अपने विरासत से लिया है। ओके, दैट इज दी, ओके, दैट जीन्स आर दी, we can say, are the hereditary characters. Okay, so genetics is the study of the heredity. Genetics is the study of विरासत। आप कहाँ से चलते आ रहे हो? आपके मीन्स जो ग्रैंड 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 ग्रेट ग्रैंड फादर थे या ग्रेट ग्रैंड मदर थे, उनका जीन्स आर फ्लोइंग इन एवरी जनरेशन टू जनरेशन में क्या फ्लो हो रहा है। ओके, दैट विल फॉर्म जीन। Okay, the genetics is we can say itself a very large subject. Okay, we just here discuss only about the principles of the Mendelian. Okay, जो मेंडल के principles है वही हम इसमें discuss करेंगे। So in genetics, we always study the pattern of inheritance of the specific trait between the parents and the offsprings. Okay, so there was a scientist that is the Gregor John Mendel, the father of modern genetics. मेंडल के एक्सपेरिमेंट तो बहुत फेमस है। ओके, आपने सभी यू ऑल हर्ड अबाउट द मेंडल एक्सपेरिमेंट ऑन द पी प्लांट। ओके, सो ऑन द बेस ऑफ दैट एक्सपेरिमेंट he gave the theory of transmissible factors, and that transmissible factors are nothing but are the traits, or we can say characters, which always inherited from our parents, which states that the inheritance is controlled by the certain factors, and that factors are known as the genes passed from parents to the offsprings. Okay, so there are three laws of the genetics. One is the law of dominance, law of segregation, law of independent assortment. Now, what is the law of dominance? Anyone? Let's make this Sir, session very interactive. Okay. sir, when Yes. two alleles are present, then one of them which is dominant that will be expressed. Okay. The dominant allele will show its character in simple language. Okay. That is the law of dominance. जो तगड़ा होएगा ना, जो स्ट्रॉन्ग होएगा, द स्ट्रॉन्ग पर्सन ऑलवेज शो इट्स पावर। ओके, एंड दैट इज द लॉ ऑफ डोमिनेंस। नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट लॉ, दैट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। नाउ व्हाट इज द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होता है? व्हाट इज द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन? During the time of the formation of gametes, two alleles of a same gene separate. ओके, सेपरेट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ Formation of gametes. हाँ, during the time of formation of the gametes. Okay, here is a term that is the gametes. Okay, gametes always are linked to the sex chromosomes. Okay, sex chromosome is sex genes जो होते हैं। 22 पेयर कौन से होते हैं? ऑटोसोमल होते हैं। 1 पेयर इज दी सेक्स क्रोमोसोम। वी कैन से जो सेक्स क्रोमोसोम जो विच विल डिसाइड द, वी कैन से जेंडर ऑफ, जो न्यू बेबी आएगा ना उसका जेंडर को डिफाइन करता है, देन इट विल मेल और फीमेल। Okay, then there are some genetic aberrations are also there. Okay, so law of segregation is the law when there is the, say, formation of gamete, the two alleles will segregate। बच्चे यहाँ पे terms का ध्यान रखना, that is the alleles,
the two alleles will segregate to each other from each other. पहले वो जोड़े में पड़े हैं, पहले priorly they are present in the pair form. After that they will segregate, okay, and become alleles, a single allele. Okay, now come to the next law, that is law of independent assortment. What is the law of independent assortment? So Different pairs of alleles separate independently during gamete formation. Hello, sir. Hmm. Anyone else? sir, it is a different gene got separated independently of one another during the gamete formation. Do you heard about the term recombinant? Recombinants? Yes, sir. Recombinants के बारे में सुना है Yes, ना? sir. सो बच्चे lobes independent assortment, आपने law of segregation में पढ़ा. Okay, no, law of segregation is the law which states that the two alleles will segregate to each other. Okay, after the segregation the allele have the choice, independently. बच्चे जिससे पहले वो segregate हुआ है, that allele will do not have any influence on the another allele. ओके, किसी दूसरे अलील का उसके दूसरे के ऊपर कोई इन्फ्लुएंस नहीं होएगा. मींस नो अलील विल कंट्रोल दी अनदर अलील. Okay, after the segregation, these alleles are independent to assort themselves. Okay, these alleles are independent to recombine with other alleles. Okay, तभी तो होता है ना कि बच्चे जो पेरेंट्स होते हैं, ओके, आई एम जस्ट टेकिंग अ फनी एग्जांपल हियर, कि बच्चे पेरेंट्स बड़ी ही अच्छे, बड़ी खूबसूरत है. ओके, द बोथ पेरेंट्स आर वेरी ब्यूटीफुल, बट जो उनका प्रोडक्ट हो जाएगा वो बिल्कुल ब्लैक हो जाएगा. ओके, बिकॉज दिस इज ड्यू टू दी वी कैन से इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ द लीव्स. ओके, अभी ये किसी के कंट्रोल में नहीं है बच्चे. ओके, द कलर ऑफ द बॉडी, the height and roughness and hair color, कुछ भी लगा लो आप, any type of character you are seeing on phenotypic character you are seeing, so these always are the under the control of the genes. Okay, so this is the law of independent assortment, that after the segregation the two alleles are always independently assort themselves without the influence of another allele. Is it clear? I think अच्छे से समझाया गया होगा. any confusion बच्चे, any question up to here? काफी टाइम हो गया हमें. कोई भी डाउट, एनी क्वेरी? No, sir. ओके ओके ओके, सभी को समझा रहे हैं ना? प्लीज Yes, इंग्लिश Yes, साइडर्स, Yes, sir. इंग्लिश साइडर्स, आर यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, sir. Which I can't see your comments. Okay, just open your mic and just yes or no. Okay, because I'm on a presentation mode. I don't have any laptop here. Okay, so there are some characteristics जो ग्रेगर मेंडल था, the Gregor Mendel observed some of the characteristics of the from a pea plant. Okay, that is the pod length, pod color, the seed is round or wrinkle, the seed color. Okay, so these are the some characteristics. Okay, I think सभी ने पढ़े होंगे. Okay, the length of the, we can say, plant, that is dwarf or short, tall. Okay, we are not going to this. Next is the monohybrid cross, dihybrid cross. Okay, बच्चे, now what are the, there are two type of characteristics are there. One is the phenotypic characters, second are the genotypic characters. So what is the phenotype? How will you define the phenotype, or how will you define the genotype? कैसे define करोगे? So What is phenotype. phenotype? So phenotype Hmm. is a observable or a physical appearance of the organism. Yes. Basically, it include the visible traits that result from interaction of a genotype gene and the Hmm. environment, sir. Okay, okay. So in simple words, we can say that phenotype, we can like these are the visible characters. Okay, genotype is not a visible. Genotype is the arrangement of genes. Genotype is the arrangement of arrangement of alleles in the genome. Okay, that is genotypic characters. और phenotypic characters, कोई बड़ा है, कोई छोटा है, किसी के बाल बच्चे काले हैं, the somebody have the hair brown color, okay, somebody have the black hair color. Okay, so these are all are the phenotypic characters, visible characters. So here one by one, जल्दी से, law of segregation. So the law of segregation states that two copies of each genetic factor segregate during the development of gametes to ensure that each parent's offspring attain one factor. Okay, so here you can see this is the
2n, we can say diploid cell. After the meiosis, it will form the mono, क्या होता है, हैप्लोइड, सॉरी नॉट मोनो, डिप्लॉइड से क्या बनेगा, वो हैप्लोइड बनेगा। ओके, आफ्टर हैप्लोइड बच्चे, दिस इज मियोसिस। मियोसिस क्या होती है, मियोसिस इज द रिडक्शनल डिवीजन फॉलोड बाय द इक्वेशनल डिवीजन। मियोसिस में क्या होता है, द जो नंबर होएगा ना क्रोमोसोम्स का, इट विल रिड्यूस टू हाफ, ओके, इन द गमीट फॉर्मेशन। ओके, एंड meiosis is the reductional division followed by the equational division. Okay, it will form a four cell, from single cell meiosis will form a four cell. After that बच्चे देखो meiosis के कितने प्रोडक्ट आएंगे, in this is the dihybrid cross. Okay, dihybrid cross in which we are representing the two type of characters. one is the one is the its color, pod color, and second the pod type. Okay, किस तरह का pod है उसका, और कलर कैसा है। Okay, this is dihybrid cross. And next, law of segregation, law of independent assortment. First of all, law of segregation is the principle described by the Gregor Mendel, in which the two copies of the each of the hereditary factors segregate from each other during the production of gametes. And law of independent assortment is the principle we can say described by the Gregor John Mendel, in which the hereditary factors are independently assorted during the production of gamete when two or more factors are inherited. Okay, now first is the first law of Mendelian inheritance, second is the second law of we can say inheritance. Okay, ये सभी बच्चे laws हैं अपने। And next है जो phenotypic ratio is the we can say 3:1, and in the law of independent assortment the phenotypic ratio will be 9:3:3:3:1. Okay, this is for the we can say independently assortment. So now what is the chemical basis of the heredity? Chemical basis क्या होता है? In 1944, Avery and its co-worker evidence. बच्चे, there are we can say there was some confusion in 1980s, 1940s, 1930s. Okay, what is the blueprint of life? Okay, at that time, scientists were very confused. Okay, what is the blueprint of life? It is a protein, it is a RNA, it is a mRNA, it is a DNA. कि क्या चीज है जो डिफाइन करती है, जो which will pass generation to generation? So there were scientists, there were some scientists, that is Avery and his co-worker, which they gave the evidence about the heredity, and they proposed the heredity lies in the DNA, not in proteins, because priorly it was thought that the proteins are the hereditary material which always pass generation to generation, but this was not correct. Okay, so the hereditary material was DNA, and DNA was finally identified as the genetic material. ओके, चलो आपको एक होमवर्क देता हूँ, जीनोम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ के आना। ओके, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, व्हाट इज द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, उसके बारे में पढ़ना है आपने। ओके, द वो कब द ह्यूमन जो आपका जो होमवर्क है बच्चे, असाइनमेंट है, दैट ह्यूमन जो जीनोम प्रोजेक्ट कब स्टार्ट हुआ, व्हेन द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट इज स्टार्टेड, व्हेन इट एंड्स, एंड हुआ भी है नहीं भी हुआ है, एंड व्हाट इज द वी कैन से कंक्लूजन, वी Sir, कैन your से voice रिजल्ट is ऑफ द not. ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। यस, हेलो, एम आई ऑडिबल? Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay. So when it was defined as a DNA, the hereditary material, which after that the structure was elucidated by the Watson-Crick model of the DNA 1952, already discussed in this presentation. So basic principles for hereditary humans. So human genome अभी सिंपली हम पढ़ रहे हैं इसके बारे में। The human genome is composed of 46 chromosome, 23 pairs are there. Human genome is diploid. Okay, जो human बच्चे genome होएगा, the human cells is the diploid in structure, means it contains 23 pairs of the chromosomes. 22 pair chromosome are the autosomal chromosome, and one is the sex chromosome, which will define the sex of the individual. During meiosis, chromosome number reduced to half, that is haploid, and sperm and oocyte will form. Okay, that's why zygote will, but sperm and oocyte are always contain the 50% of DNA. Okay, sperm and oocyte में सिर्फ 50% of DNA ही present होता है, and when they combine, they will form a single cell. After fertilization, they will form a single cell, and that cell restore its ploidy, and that will become a diploid status. Okay, attain its again diploid status, and zygote will form. And after zygote formation, in the mitosis division,
Now here not meiosis बच्चे, after the formation of zygote, after fertilization, zygote will divide, किसके द्वारा डिवाइड होएगा? थ्रू द डिवीजन, दैट इज द माइटोसिस. माइटोसिस इज द इक्वेशनल डिवीजन. ओके, एक से दो बनेंगे, दो से चार बने, चार से आठ बनेंगे, ओके, आठ से 16, ऐसे करते करते मींस इट विल फॉर्म अ लार्ज सेलुलर बॉडी. Okay, that will form an embryo, and then embryo will form fully fledged fetus. Okay, here you can see here adult somatic cell, the 2n. After mitosis it will form 2n, 2n बच्चे. Okay, germ, then after meiosis the germ cell will form egg and sperm. Okay, and after fertilization it will form a zygote, and after that after zygote it will form a embryo. Okay, so there are some characteristics terms are there. Okay, about DNA. So DNA के ऊपर दो तरह का रीजन होता है. The DNA contain two type of region. One is the coding region, second is the non-coding region. So in DNA forensics we always encountered with the non-coding region, and that non-coding region is individual characteristic in every, we can say, in the population. Okay, twins have the same set of genome. Okay, twins में कोई बच्चे नहीं होगा. We can differentiate twins only based on their fingerprints. और fingerprints के बेस पे हम twins को differentiate कर सकते हैं, we can distinguish कर सकते हैं. Okay, individualize कर सकते हैं. But the twins have the same set of DNA, same genome. So DNA material chromosome composed of coding and non-coding region. Coding region known as genes. Okay, coding region genes होते हैं, and genes are linearly distributed on the chromosome at a fixed position called loci. Loci is the, we can say, simple address होता है. Like you have your home address. Okay, so accordingly genes have their address. Okay, उनका भी घर का एक address होता है. Genes consist of exons. Exons means protein coding region, and introns. Intron means intervening sequences. Do you know about the splicing? Splicing एक प्रोसेस होता है in transcription. Splicing a process in transcription. What is splicing? Anyone? कभी पढ़ा है? What is splicing? Anyone? Yes or no? No, sir. No, sir. No, sir. Okay. Do you study about the No, transcription sir. thoroughly? Thoroughly कभी पढ़ा है ट्रांसक्रिप्शन कभी? Anyone? So Yes, sir. splicing is the process in the eukaryotic cells where the non-coding introns are removed from the pre-mRNA and then the coding exons are joined together to form mature mRNA. Good. Yes. Good. Good. So which is splicing and capping. There are the two processes. कहीं पढ़ना. That is a very interesting topic in the DNA. Okay. So DNA में sorry in transcription DNA का part है. So transcription contain two type of processes there. When the transcription process is completed, like mRNA बन गया, tRNA बन गया, rRNA, that different type of RNAs are there. Okay, and they have different functions. Different name है, then different function भी होएगा सभी का. So there is a one process that is splicing. Splicing is the process in actually mRNA contain two type of region is there in mRNA also. One is the coding region, second is the non-coding region. Coding region is known as exon and non-coding region is intron. So splicing is a process in which the non-coding region, that is introns, the intervening sequences are removed. Okay, after the removal of that intervening sequences, the coding region will join. Okay, through some, we can say, chemical कुछ catalyst होते हैं. Okay, then after we can say क्या होएगा, addition of that part, that coding part, the mRNA now become functional. तभी वो आगे translation करेगा. If splicing is not done, then there is a no further process is there. ओके बच्चे, इन सम केसेस इन जीन रेगुलेशन और जीन एक्सप्रेशन कभी अगर आपने पढ़ा हो, 12th क्लास का बड़ा अच्छा चैप्टर है, वी कैन से टॉपिक है. इफ यू रीड द एनसीईआरटी ऑफ 12th क्लास बायोलॉजी, ओके, उसमें बड़ा ही अच्छे से समझाया हुआ है जीन रेगुलेशन जीन एक्सप्रेशन, या टॉपिक ने भी जीन रेगुलेशन जीन एक्सप्रेशन पढ़ना आप जाके. उसमें क्या होता है, देयर इज सम मोल फंक्शनिंग इज देयर. ओके, सम टाइम the splicing will not occur.
splicing नहीं होएगा, and due to that translation होएगा, and if there is no translation, protein will not form, and if the protein are not formed, then it will lead to the some genetic aberrations. Okay, genetic aberrations like उसमें बच्चे अगर प्रोटीन नहीं बनेंगे, then it will lead to the some genetic disorders. Okay, there are so genetic disorders are there, आप सभी को पता ही होगा ना, genetic disorder किसी भी अगर if there is any we can say mutation, we can say it will lead to the mutation is the addition, deletion, or we can say complete set of जो gene होता है बच्चे, it will depleted out. Okay, so it will lead to the genetic aberration or genetic disorders. That polymorphic variable markers are found throughout the non-coding region of the human genome, which is very important for us in forensics. Okay, because polymorphic region or we can say VNTRs, STRs, जो आज के समय में यूज कर रहे हैं, STRs, short tandem repeat markers, are all the non-coding region of the DNA, which are individualize the every person to person. There are some alleles such as recessive allele, already discussed very thoroughly. Okay, recessive allele, its effect masked by the dominant allele. Homozygous condition, if both alleles are same. Heterozygous condition, if when alleles are different. Genotypic condition, when genotype characterized by the allele present at the genetic locus. Okay, genotype क्या है? Genotype is the study of genes at a specific locus. Okay, and then the DNA profile. No, what is DNA profile? A DNA profile is the combination of genotype. DNA profile क्या होती है? It is the combination of genotype. कभी आपने हैव यू सीन द डीएनए प्रोफाइल कभी देखा है? कभी किसी ने डीएनए प्रोफाइल देखा है इन डीएनए फॉरेंसिक्स? एनीवन? जो उसके ऊपर बच्चे पीक्स बनते हैं, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ मार्कर्स आर देयर, TH01, TPOX, CISF, SP, ऐसे करके मार्कर्स होते हैं, D1SAT, ओके, एमेलोजेनिन, ऐसे बच्चे कई सारे, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ मार्कर्स आर देयर. सो दैट मार्कर्स आर, a single marker is a genotype, and the combination of that genotype will form a DNA profile. And now what is DNA typing? The study of DNA profile is called DNA typing. Okay, or we can say DNA profiling. DNA typing or DNA profiling is the process of determining the genotype present at a specific location along the DNA molecule. Okay, so now come on the next topic, that is mutation. क्या टाइम हुआ? हाँ, म्यूटेशंस क्या होते हैं? म्यूटेशंस, एनीवन? म्यूटेशंस. So mutation is a sudden or the permanent change in the DNA sequence itself of a gene or a chromosome. Okay, so mutations are the some, we can say, alteration. Mutation is some alteration in the coding, we can say coding region of the DNA, obviously in coding region of the DNA. Okay, it refers to the change in the DNA structure of a gene. Okay, the substance which can induce the mutation are known as the mutagens. There are different type of mutations are there. Point mutations, okay, replacement of one base pair by another resulting in the point mutation. These are again also two types, transition and transversions. Okay, now there are transition. In this, a purine or pyrimidine replaced by another. Okay, point mutation क्या होगा? In transition, a purine is replaced by pyrimidine. Purine like guanine will be replaced by hyamine. Okay, so this is the, we can say, transition. And next, transversion. Transversion, there is a characteristic, we can say, replacement of the purine by the pyrimidine or vice versa. आया समझे? purine और pyrimidine replace होंगे by one another in transition. Transition में क्या होगा? The purines and pyrimidines, अगर उन्होंने A और T आना था, it will change to the TA. Okay, and transversion, it will replacement of the purine by pyrimidine or pyrimidine by the purine. Okay, these are the point mutation. Next is frame shift. Frame shift नाम से पता चलता है, as per the name, frame shift. Frame shift is the, we can say, a frame of a DNA will shift toward the, we can say, deletion or inversion. In frame shift, there are two types. One is the inversion, second is deletion.
These occur when one or more base pair are inserted or deleted from the DNA respectively, causes the insertion and deletion of the DNA. Okay, that is the frame shift mutation. Okay, you can see here in this there are 1, 2, 3, and 4. But when insertion is there, it will form A 1, 2, 3, 4, and 5. just एक one जो pair है ना, it will add up here, and here in deletion it will become 3 from 4. Okay, so these mutation will cause the genetic disorders. There are two type of consequences of the point mutations. One is the silent mutation, second is the missense mutation, और इसको nonsense mutation ही बोलते हैं. Silent mutation, in which the codon of mRNA containing the changed base pair may code for the same amino acid. Silent mutation is the mutation which means whose effect like जो कभी डीएनए को इफेक्ट ही नहीं करेगा बच्चे. The effect of that mutation will not affect the DNA functionally. Okay. For example, if UCA is the codon. UCA is a codon which code for some amino acid that is serine. Okay, amino acids होते हैं. I think all you know about the amino acids. बच्चे क्या है ना, DNA is a very vast topic. One by one एक एक टॉपिक जुड़ता जाएगा. And here is a one topic आगे ऐड होता जाएगा. Okay, so I'm not going to the amino acids. Amino acid का arrangement क्या होता है? There are three type of codons. Stopping codon होते हैं. Initiation codon is there. So I'm not going to discuss that codon, that type of post part of the DNA. In a simple example, silent mutation, the mutation in which the functionary of the DNA is not affected. Okay, for example, if UCA codes for the serine and it's a change in the UCU. Okay, so it again still code for the serine. So this is due to the degeneration of the genetic code. Okay, there is no detectable effect in the silent mutation. And in missense mutation, there if the changed base may code for the different amino acid. Okay, अगर उसने if the UCA code for serine, but there is a mutation, it will become a ACA, then it will code for the threonine. Okay, threonine is a type of, we can say, amino acid. The mistaken amino acid may be acceptable, but sometimes the amino acid may be acceptable or sometimes not acceptable or sometimes partially acceptable, and this acceptable non acceptable condition will lead to the genetic disorder such as sickle cell anemia. Okay, hemophilia. Okay, these all are the genetic disorders. Sickle cell anemia क्या होता है? What is sickle cell anemia? Very popular disease or genetic disorder. What is sickle cell anemia? Anyone? How many students are there, Ayush, in this internship, in this lecture right now? So right now it's 32 students here. Okay, so 13 students में से किसी को तो पता होगा. Anyone? What is sickle cell anemia? Sir, sickle cell anemia is like a blood disorder, genetic disorder, where the genes that that would be shaped as a sickle shaped red blood cells that cannot actually carry Hmm. the oxygen. Yes. The red blood So in cells will sickle be cell. shaped as a sickle cell. Yeah, that's Yes. it. So sickle cell anemia, the red blood cells become sickle shaped. Okay. And passing of that cell in through from the capillaries, small capillary will very difficult. Or- Okay. So next is nonsense mutations. Nonsense mutation same the codon within the altered base may become a termination codon. Okay. Sometimes there is that very large percentage translation. Translation be I think Patna, if you have a time, please read about translation, transcription, DNA replication thoroughly along with its enzymes. Okay, बहुत ही लंबा प्रोसेस है. I also forget some enzymes, some catalyst. So there are some non-sense mutations. In non-sense mutation, it will lead to the termination codon. Okay, अभी प्रोसेस ने रुकना नहीं था. Okay, there is some need for the some proteins, but it will lead to the termination of that part of the machinery. For example, change in the UCA may result in the UAA. UAA is the stop codon. How many stop codon are there? Anyone? Stop codon कितने होते हैं? How many stop codons are there in translation? Sir, mainly three. 3, sir. Uh, Three, कौन sir. कौन से? That Sir, codon are it's UAA, UAG, uh, and UGA.
Sir, Okay, and UEAG, sir. initiation. Okay, okay. And initiation codon. What is initiation codon name? एक initiation codon भी होता है, which will initiate the process of translation. AUG. हाँ, AUG. Okay. So it will lead to the termination of protein synthesis. And it will we can say initiate the protein synthesis. ज़्यादा भी कर सकता है, कम भी कर सकता है. So these are the consequences of point mutations. Okay, simple diagram. Silent mutation, missense, nonsense. Okay, सब है. Okay, now consequence of frame shift mutation. These result in the altered reading frame of the mRNA. mRNA का पूरा फ्रेम ही अगर चेंज हो जाएगा, if there is proper change in the we can say frame of the mRNA, then we can't read it properly. The DNA can't read it properly. ओके, डीएनए अगर इसको प्रॉपर्ली रीड नहीं कर पाएगा, इट विल लीड टू दी बैड इफेक्ट. ओके, उसके रिजल्ट सही नहीं आएंगे. द मशीनरी ऑफ एमआरएनए डज नॉट रिकॉग्नाइज दैट अ बेस वाज मिसिंग और न्यूली एडेड. द रिजल्ट दैट द प्रोटीन सिंथेसिस विल हैव सेवरल ऑल्टर्ड अमीनो एसिड्स और prematurely terminate the protein. Okay, it will lead to different type of consequences. Next, we'll go about the population genetics. Next topic is population genetics. Okay, there are so many topics I have added in this presentation. So what is population genetics? थक तो नहीं के बच्चे अभी? Anyone? ब्रेक लेना है 5 मिनट का? बिकॉज मुझे तो लेना है, पानी पीना है. कैन आई ड्रिंक वाटर? एनीवन? पानी पी सकता हूँ? Yes, no. Yes, Yes, sir. sir. Are you comfortable with this session? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Okay. So next is population genetics. Population, what is population genetics? Anyone? So population genetic is the study of genetic composition of a population and like how such like mutation, natural selection or genetic drift. So Okay, good. Darwin theory. Okay. So population genetics is the basically the study of the genes in a given population within the space and time. Okay. In the forensics, so many colleges or universities are doing the research on the population. Okay, अगर आपके कोई रिसर्चर या प्रोफेसर होंगे, they are also doing the research on the population genetics because also did this research on the population, some part of population. Okay, population genetics is a very important part in the we can say research field also, or we can say in the DNA forensics. Because if we know the database, if we have a database of the population of a given population, like I'm taking an example of this island. I am in Andaman Nicobar Island. Okay, there are so many type of islands are there. Okay, small islands are there present, and there are so many tribes area are there. Okay, आपने जैसे सुना होगा North Sentinel Islands is there, and there is Sentinel population. There are different. I mean मुझे भी नहीं पता है because I'm just recently joined in this lab, and there are different type of tribes are there. So but they are not socially, we can say they are not social. Okay, वो बाहर की दुनिया से इतना ज्यादा अभी सोशल नहीं हुए. They do not know about the how we are living. They just वैसे ही रह रहे हैं, like प्री हिस्टोरिक मैन होता है ना, वैसे ही रह रहे हैं, वैसे ही कपड़े हैं, एंड लाइक सेम शेल्टर, एंड वही सेम तीर एरो और वो होता है उनके पास. ठीक है. एंड टू स्टडी द पॉपुलेशन genetics, it will help us in the we can say define the criminal profiling में help होएगी, and also to study the different type of viruses and bacteria, जो कई सारे बच्चे होती है, बीमारियां होती है ना, diseases होती है, so उनको study करने में भी कई सारे help करते हैं. So population genetics is a study of any heightened variation on a large scale in a given gene pool. Gene pool क्या होता है? A gene pool is a we can say collection of genes in a given population. Okay, so it's modulation in time and space, and it is an attempt.
Genetics is a study to attempt to quantify the variations observed within the population group in terms of allele and genotype frequencies. In other words, population genetics study the cause of pattern of genetic variants within the Amazonian population. Okay, population genetics ये भी help करती है कि patterns देखना. We can also see the patterns like American, Asian, Indian or Chinese population कैसे vary करती है. This is a broad study. Within the India, we can also study the population within the states. Okay, पंजाब हरियाणा कैसा है, and also Punjab Jammu Kashmir कैसा है, Punjab Maharashtra कैसा है, and accordingly, okay, we can also do the population, and within state we can also do the population study, like different caste के या different जो communities होती है ना, उसके बेस पे हम population study कर सकते हैं. Okay, so there is a allele frequency. Allele frequency population in population genetics, allele frequency is a very important part. Allele frequency can be calculated directly by counting the number of allele of one type at a given locus, dividing it by total number of alleles at that locus in a sample population. Because we have to study on a simple specific allele, so we can say calculate the allelic frequency of that particular allele. So here is the formula for the allelic frequency, that is the number of allele per of one type to the total number of allele, okay, over that population. Clear? Next is genotype frequency. अभी allelic frequency हो गया है. Then after that we are going to the genotypic frequency. So genotypic frequency can be calculated by dividing the number of individuals with one genotype to the total number of individuals, the sample genotype. Genotype को study करना. First of all, we are taking the allelic frequency, then we are taking the genotypic frequency. So the summation of all the genotype frequency at the locus equal to the 1. ओके, अगर हम एक सैंपल एक पॉपुलेशन स्टडी कर रहे हैं, वी आर नोटिंग द पॉपुलेशन जेनेटिक्स एट वन प्लेस, सो द summation of all the genotype will be 1. If there is not equal to 1, then there is always we can assure that there is some mutation, there is some variation in the gene pool, in a given gene pool. Okay, so help करेगा in different new research methods. Next is heterozygosity. Heterozygosity is the proportion of allele at a given locus that are heterozygous or is calculated as. So I'm just taking, but you are all are the science students. Okay, please don't offend if I'm taking any example. Okay, एक example ले रहा हूँ मैं इधर, like in intercaste marriages. Okay, उसमें क्या होता है, जो न्यू प्रोडक्ट आएगा ना, मीन्स इन इंटरकास्ट मैरिज आफ्टर द फर्टिलाइजेशन द न्यू बेबी विल वी कैन से जो बर्थ लेगा ना, देन it will more viable. Okay, it will more viable than the same caste के अगर मैरिज होती है, because it always shown that the intercaste marriages will is we can say diverse the gene pool, it will not converge the gene pool. ओके, अगर सेम कास्ट में अगर मैरिज होती है, इफ देयर इज मैरिज इन द सेम कास्ट, इट विल कन्वर्ज द जीन पूल, भी कन्वर्ज कर देगा बच्चे, इट विल लीड टू द जेनेटिक डिसऑर्डर. ओके, सो तभी अगर आपने सुना होगा, अगर आप पंजाब हरियाणा जैसे साइड के हो, हिंदी में बात कर रहा हूँ मैं, कि सेम गोत्र का शादी नहीं करते है ना, बिकॉज सेम गोत्र क्यों, क्या जीन पूल कन्वर्ज होता जाता है. ओके, इट विल लीड टू द कन्वर्जेंस ऑफ द जीन पूल. So it is the proportion of the allele at a given locus that are heterozygous and calculated as, इसलिए formula है H is equal to 1 minus summation P square. So H is the heterozygosity and P square is the allelic frequency of that locus for the homozygous condition. उसको माइनस कर देंगे. ओके, फॉर द होमोजाइगस, बिकॉज वी हैव टू कैलकुलेट द हेटेरोजाइगोसिटी एंड वी हैव टू माइनस द होमोजाइगोस नेचर. The amount of heterozygosity is at the locus is sample is in a sample population is a measure of the genetic variation. Heterozygosity जितना होएगा, it will lead to the genetic variation and it will helpful in the research field. Okay, not in the DNA, not in the forensic, but it also helpful in the but in some way it will also helpful in the forensic also. Okay, so higher the heterozygosity and the more the variation at the given locus. Okay, उतनी ज़्यादा बच्चे variation होएगी and उतने ही ज़्यादा डीएनए प्रोफाइल भी अच्छा बनेगा. If there is a more heterozygosity, it will lead to the more variation at given locus and it will lead to the more accurate genetic profile. So there is one principle, that is the Hardy-Weinberg principle. So Hardy-Weinberg principle is very important
principle in the population study. अगर population study आप कर रहे हो, this is the very important principle. Independently given by the two scholars, दो scholar थे in 1900s, allowing the prediction of genotype frequency to made based on their allele frequency. Some conditions for this principle, बच्चे, but like if you have chemistry, अगर आपने chemistry पढ़ा हो, some ideal condition, but that are not actually be followed by some gases. Okay, एक ideal gas equation होती है बच्चे, सेम दैट ऐसी ही यहाँ पे इन्होंने तीन कंडीशन रखी थी। कौन कौन सी कंडीशन थी वो? पॉपुलेशन मस्ट बी लार्ज, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बड़ी होनी चाहिए, रैंडम मीटिंग होनी चाहिए, देन रैंडम मीटिंग एंड लैक ऑफ म्यूटेशन, माइग्रेशन एंड नेचुरल सिलेक्शन। If these above conditions are met, the population will be in the equilibrium and following result are expected. ओके, बट ऐसा नहीं होएगा, लैक ऑफ म्यूटेशन, और चलो लैक ऑफ म्यूटेशन हो गया, रैंडम मेटिंग हो गया, इफ द पॉपुलेशन हमने लार्ज ले लिया, बट माइग्रेशन, हाउ वी कैन कंट्रोल द माइग्रेशन, हाउ वी कंट्रोल द नेचुरल सिलेक्शन? ओके, सो द फ्रीक्वेंसी ऑफ allele मस्ट नॉट चेंज फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट। सो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? विल नॉट बी चेंज। Okay, the genotype frequencies can be predicted by allele frequencies, which here is the equation, that is the p square is equal to p square plus 2pq plus pq square is equal to 1. It should be 1, equal to 1. The sum of the genotype frequency should be equal to 1, but it never be equal to 1 because there is can't control the natural selection, we can't control the migration, okay, we can't control the mutations. Okay, this is just assumption. एक principle ऐसे था which will define the some condition that how we can pass the one gene from generation to generation. Okay, but that's why it will lead to the variation. अगर ये principle मुझे follow नहीं होगा, then it will lead to the variation in the population. Okay, so this is the Hardy-Weinberg principle. The frequency of homozygous dominance, the p square 2pq is the heterozygous condition, q square again in homozygous condition, it should be equal to 1. Okay, so that are all about the population genetics. बच्चे population genetics इतना छोटा नहीं है, it is a very large topic, but I just here briefly आपको मैंने explain किया है. Okay, here. So polymorphism in DNA. Polymorphism in DNA क्या होता है? What is polymorphism? Anyone? Polymorphism? Anyone? Morph. What is the meaning of morph? MORPH. What is the meaning of morph? पता है किसी को? Anyone? What is the meaning of poly? Anyone? Poly किसी को? means a many, one Change many. shape, form, or appearance. Morph means? Morph means? Sir, Change different shape, form, or Many appearance. forms. Okay, forms and appearance. Okay, poly means many, or polymorphism in DNA. Polymorphism in DNA means there are different forms of the DNA. Okay, there are different type of the DNA. Now, different type of DNA means what do you mean by different type of DNA? But actually DNA has the different forms according to the sequence of the nucleotide. Okay, are you getting my point? There are two primary forms of the variation are possible at DNA level. One is the sequence polymorphism, second is the length polymorphism. In sequence polymorphism means the sequence of like I'm taking just an example here. Here is example AGACT. Okay, but there is a we can say बच्चे यहाँ पे एक repeat change हो रहा है AGACT. Okay, again AG, but here क्या होगा? Some sequence will change. Okay, so this is sequence polymorphism. But if we taking about the length polymorphism, इसमें क्या होता है ना, सीक्वेंस पॉलीमॉर्फिज्म में कि जो एक सिंगल न्यूक्लियो नाइट्रोजनस बेस होएगा, इट विल रिप्लेस बाय द अनदर. ओके, इट विल लीड टू द वेरिएशन जो हम बोलते हैं ना कि डीएनए प्रोफाइल होता है, द एवरी 99% डीएनए इज सेम बट 0.01% इज वी कैन से इंडिविजुअल, कैन इंडिविजुअलाइज द पॉपुलेशन. ओके, क्यों डिफरेंट होता है 0.001%. Okay, so that is due to the sequence polymorphism, or we can say length polymorphism. In some cases, in length polymorphism, if there is some, we can say condition like AATG. This AATG have 3 repeats, but in second individual it may be 2 repeats, or in some individual it may be 5 repeats. Okay,
So these different type of repeats can lead to the variation in the population. Are you getting my point? समझे बच्चे? रिपीट करने की नीड है यहाँ पे? No, sir. No, sir. Are you getting my point? Yes, sir. Yes, So sir. हाँ, so sequence polymorphism, length polymorphism lead to the variation, or we can say individualization in the DNA, or we can say population. Okay, based on that, we have to make a genetic profile in the DNA forensics. So I think this is the last topic of the today. Okay, we are going to sum up this session here. So physical chromosome location. Physical chromosome location क्या होती है? Do you know about the centromere, telomere? What is the centromere? What is telomere? What is P arm? What is Q arm of chromosome? So basically, the central region of the chromosome known as centromere, which control the movement of chromosome during the cell division. Okay, this is the structure of DNA chromosome. This is chromosome number 12. These two are the arms, and that arms are known as chromatids. Okay, this center is a centromere, which control the movement of these two arms. On the we can say end of the chromosome, जो इसका last part होता है, it is the telomere. Okay, कोई बंदा बुढ़ा क्यों होता है? Why a person become old? Because these telomere become क्या होते हैं? वो घिसते रहते हैं. Okay, खत्म हो वो telomere, due to the depletion of telomere, the person become old. Okay, so it also a factor of, we can say, aging. Okay, so this is the P arm, this is the Q arm. P arm is the short arm, Q arm is the long arm. Okay, जब भी आप कभी किसी का कोई मार्कर देखोगे, लाइक इफ यू सीइंग द मार्कर दैट इज D1S80. Okay, well, that is the address of that gene, that marker on the chromosome. Okay, it will we can say define the location of or address of the that gene. Here is the 12p3. 12p3 means 12 number of chromosome. P means वो P arm पे पड़ा है, and P33 means उसमें कितने कौन से बैंड पे is present on the 3 band. Here this is the gene. 12p3 is a gene. नीचे क्या आएगा? 12q5. 12q5 means 12 chromosome, number of chromosome. Q means long arm, and 5 is the band number. Okay. The on the either side of the centromere are arms terminated by the telomere. Shorter arm is the P for peptide, and longer arm is Q, because it is come after the Q. Okay, so this is this, we can say, some physical chromosome location, or this is the nomenclature of DNA marker. Okay, nomenclature, like जैसे मैंने आपको अभी बताया ना, as I already explained here, कि how we can we can like define the any DNA marker. So this is the method. Okay, nomenclature of the DNA marker. Is it clear? If a marker is a part of gene or fall within a gene, the gene name is used as a designation. For example, short tandem repeat. There is a marker, STR marker, TH01, is from the human tyrosine. Tyrosine, but TH is come from the tyrosine hydroxylase. Okay, TH come from the tyrosine hydroxylase, located at chromosome number 11. Yeah, 01 is a portion of TH01 come from the fact that the repeat region is the sequence intron 1. Means उसे बच्चे जो repeat का sequence हो only one है, that is known as TH01. Okay, means every marker have its different specification according to its nomenclature. ओके ऐसा नहीं कि अभी सभी का सेम ही तरह का नोमेनक्लेचर होगा. डिफरेंट मार्कर है, डिफरेंट टाइप ऑफ नोमेनक्लेचर. आप क्या करना, उसकी डीएनए ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के ऊपर जाना. आफ्टर गोइंग टू द ह्यूमन जो जीनोम प्रोजेक्ट की साइड पे जाने के बाद यू विल सी द होल द डीएनए मार्कर्स विद नोमेनक्लेचर. ओके, वन बाय वन it is very difficult to learn. Okay, but you can learn only 5 to 10 markers if you want. So here is one more example, that is the hum HUM TH01. That HUM is included because it is of extracted from the human genome. Okay, so it is known as HUM TH01 STR marker. So how these are, we can say, designated.
DNA marker that all outside the GNA region designated by chromosome position. Okay, like which there are the some STR marker like D5S818 or DYS19 are the example of marker not found within the gene region. But there are some which are outside the DNA, we can say gene region. So they are normal, we can say designated like this, like that. Like D stand for DNA. Next character is stand for the chromosome number 5, and it is on bichromosome. Okay, same for the second marker. It is on chromosome number 5. So S stand for the fact that DNA is a single copy of sequence. मतलब एक ही कॉपी है सीक्वेंस का, उसका डबल रिपीट नहीं है. Okay, so the final number indicate the order in which the marker is discovered, and which is the final number 19 18 जो है. Okay, that is we can say the number according the discovery of that marker. Okay, कैसे वो discover हुआ, कौन से number पे discover हुआ, that accordingly that number is given to that marker. Okay, like here is a simple example. D16S539. D means DNA, 16 means chromosome, S means single copy sequence, and 539th locus describe chromosome number 16. Means on chromosome number 16, there are already 538 locus are already described, and newly described is 539 locus. Okay, that's why its name as D16S539. Okay, so this is the all human genome of a human. Okay, so there are the 22 autosomal chromosome and one is the sex chromosome. Okay, according to the रखे जाते हैं. Okay, according to the size and shape they are arranged, and this is the mitochondrial DNA. In mitochondrial DNA there are 16,569 base pair, and it contains 100 copies of per cell are present in the mitochondria. Okay, clear? Is it clear to all? Is it clear to all? So Yes, sir. tomorrow we will study the history of DNA profiling. Okay, different eras है उसके DNA profiling के. Okay, today we discussed about the basics of DNA, basics of genetics, basics of DNA population genetics, basics of structure of DNA, and then translation, transcription means central dogma. Okay, and there are some other topics also which we discussed today. Okay, I think it was a very long session. Okay, any doubt? Any doubt? Anyone? Sir, I have one question. Yes. Sir, it's like related to a crime scene, sir. Okay. Uh, Okay, okay, okay. Sir, here, we found a sample of hair. Okay, sir, which is without root. And while the suspect refused to provide a blood sample. So, which types of DNA can be obtained from a hair, and what is the limitations or that we can identify to the suspects? Okay. So if you are on a crime scene, are you comfortable in Hindi? हिंदी में Uh, बताऊं आपको? yes, sir, yes. Great. So बच्चे अगर आप क्राइम सीन पे आपको मिलता है जो एग्जांपल आई एम आल्सो एक्सप्लेनिंग इन इंग्लिश टू. अगर आपको हेयर सैंपल मिलता है फ्रॉम क्राइम सीन बट द accused or the suspect denying to give his blood sample. Okay, and without his or her will हम ले भी नहीं सकते. Okay, because it is against the fundamental right of a person. So उसमें क्या होएगा? First of all, from here we can extract the two type of DNA. One is the mitochondrial DNA, and second is the nuclear DNA. Nuclear DNA तभी ही निकाल पाएंगे if the root is attached to the hair. Okay, but Yes, sir. in rare cases में ही root attached होती है. Yes, sir. Okay, we just obtain collect only the shaft of the hair. Only हमें shaft ही मिलता है hair का, but we like बहुत सारे rare cases होते हैं कि जिसमें काफी heinous crime है और जो victim है, like it is we can say taking example if it is of a sexual harassment case कि जो victim है उसने काफी जोर से उसके बाल को खींच लिया और उसके हाथों में विद along with इस रूट आ गए है ना, तभी हो सकता है. अदरवाइज ऐसे क्राइम सीन पे अगर कोई हेयर, क्योंकि बिकॉज हेयर फॉल भी है. ओके, मिनिमम पता नहीं कितने नंबर तो याद नहीं है बट इन अ डे 24 आवर अपने जो हेयर वो भी बच्चे फॉल होते हैं विदाउट रूट. ओके, सो ना क्राइम सीन Yes, sir.
From here we can extract two type of DNA. One is the nuclear DNA if the root is present. Second is the mitochondrial DNA from the shaft. Okay. Okay, sir. Thank you, sir. हाँ, नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन था उसमें कि कौन से हमें चैलेंजेस आएंगे ना बच्चे, इफ Yes, वी sir. डो नॉट हैव एनी रेफरेंस सैंपल, अगर अपने पास रेफरेंस सैंपल नहीं है, ओके, देन इट इज यूजलेस। ओके, वी कांट गिव ए रिपोर्ट फ्रॉम एफएसएल टू द कोर्ट। और Okay, अगर sir. कोर्ट का ऑर्डर आएगा कि हाँ जो अक्यूज्ड है, सस्पेक्ट है, कि उसका आप डीएनए सैंपल ले लो, ठीक है, देन वी कैन कलेक्ट द डीएनए सैंपल फ्रॉम दैट अक्यूज्ड और वी कैन से सस्पेक्ट। ओके, अदरवाइज एक सेकंड ऑप्शन और भी है, बट उसमें बच्चे थोड़ा सा चालाकी करनी पड़ती है हमें, कि उसके घर में जाओ, उसके रूम में जाकर बैठ जाओ, सस्पेक्ट है, मिस एज अ दोस्त या कुछ भी, मिस क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन में ना, इन्वेस्टिगेशन में बहुत सारी चीजें, हिट एंड ट्रायल मेथड भी होते हैं। बोलते हैं कि अगर सीधी उंगल से घी आने के लिए टेढ़ी करनी पड़ती है, तो एज अ सीन ऑफ क्राइम ऑफिसर हम वो कुछ करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि अगर हम किसी घर में चले जाएंगे, वहां से उसकी कंघी जो कॉमिंग करता है, ओके, या फिर उसका कोई एप्रल जो जो भी मतलब उसके जो कपड़े वगैरह उसको उठा के ले आएंगी, ठीक है, बट किसी को पता नहीं लगने देंगे। Okay, ठीक है, sir. बट दैट इज अनएथिकल। ओके, वो अनएथिकल प्रैक्टिस होती है। एथिकल इज बाय कोर्ट परमिशन। ओके। Okay, sir. Thank you, sir. हाँ, यस, एनीवन एल्स? Sir, I have a question. यस प्लीज। So this is related to the mutation topic. So if at all, say for example, a pregnant woman had undergone mutations because of the sun exposure or something, but before pregnancy she didn't have it. During the pregnancy she had it. So in that case, when will the mutation really affect the child, or will it just go with her itself? म्यूटेशन बच्चे, इट विल डिपेंड अपॉन द, वी कैन से रिकम्बिनेशन, रिकम्बिनेंट जीनोम जो बनेगा। आर यू कंफर्टेबल इन हिंदी? Yes, sir. ओके, आफ्टर द रिकम्बिनेशन, जब रिकम्बिनेंट बनता है ना बच्चे, लाइक इफ द म्यूटेशन इज प्रायर टू द फर्टिलाइजेशन ऑफ एग एंड स्पर्म, it will affect it may affect the baby child, but if the mutation is after the we can say fertilization of egg and sperm, it may not be affect the child। ओके, बट बच्चों डिपेंड करता है कि किस तरह का म्यूटेशन हो रहा है। इट इज ड्यू टू द रेडियोएक्टिव सब्सटेंस। अगर रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है देन इट आई कैन से दैट 90% वो डालेगा ही इफेक्ट जो न्यू बॉर्न बेबी होगा। Okay, if this is not like a simple mutation, like due to some malfunctioning of the any organ or any part of the cell or any part of the body, okay, then it may not affect the baby child। Okay, sir. Okay, Thank you so much. okay, anyone else? Everyone, you can ask your doubt in Hindi or English, both languages. Yeah, कौन कौन से यूनिवर्सिटी से बच्चे आप सभी? विच यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस यू आर स्टडिंग? एनीबॉडी फ्रॉम पंजाब? एनीबॉडी फ्रॉम पंजाब, from Haryana, from Himachal, from Maharashtra, from Kerala, Chennai? Hello, sir. I have a question. Hello. Yes. सर, अगर कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस हुआ है और Hmm. उसके बाद हमें वहाँ पे लाइक ब्लड मिला है, पर वो Hmm. उसमें डीएनए मिला है, लेकिन डिफरेंशिएट करना है कि वो सीमन का है, मतलब सीमन का है या बॉडी के किसी और पार्ट का है, तो हम डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं? नहीं, अगर आपको ब्लड मिला है तो फिर वो सीमन का कैसे होगा? सर, एक केस हुआ था, सर ने बताया था हमारे हम्म, प्रोफेसर ने कि हम्म, एक लड़की थी हम्म, जिसको कुछ तो इशू हम्म, था अपने बॉस से, तो उन्होंने क्या किया था, ब्लड लेकर वो अपने वजाइना में इंसर्ट कर दिया था और वहाँ डीएनए फाउंड हुआ था। तो ओके। उसके बेसिस पे हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि वो डीएनए कहाँ, मतलब बॉडी के किस पार्ट का है?
मुझे ऐसे तो देखो नहीं पता चलता कि ब्लड से हम डिफरेंशिएट तो नहीं कर पाते कि कौन डीएनए कौन से किस पार्ट का है। अगर वो हेयर का है देन हेयर से हम पता कर सकते हैं कि हेयर कौन से बॉडी पार्ट का है और डीएनए कौन से बॉडी पार्ट का है। ओके। बट ब्लड से ब्लड हाँ दो तरह का है, जैसे वी टॉकिंग अबाउट द फीमेल। ओके। देन मीन्स एक सिनेरियो ऐसा हो सकता है, अगर आपने क्वेश्चन पूछा है उसका मैं आंसर दूंगा आपको। एक क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि लाइक जो विक्टिम है, ओके, वो ऐसे क्लेम करे कि आई वाज इन माई मेंस्ट्रुअल साइकिल फेज, okay, and that person did like sexually assaulted me, okay, at that time, and during that time like blood में डीएनए मिलना मोस्ट प्रोबेबली पॉसिबल होता है। ओके। तो उसने ऐसी मीन्स चाहे कहानी को फ्रेम किया या कुछ भी जो एक्चुअल में हुआ है उसके साथ, बट एट दैट टाइम द डीएनए इज ऑल्सो इट सेल्फ इज अ इंडिविजुअलाइजिंग फीचर, और यू कैन से इंडिविजुअलाइजिंग एविडेंस। उसमें क्या होता है ना, रेफरेंस सैंपल दोनों के लिए जाएंगे, विक्टिम के भी एंड और जो रेफरेंस सैंपल जो अक्यूज रहेगा उसका भी लिया जाएगा, एंड जिसके साथ प्रोफाइल मैच करेगा देन उसके साथ उसका पता चल जाएगा वो उसका ही है डीएनए। ओके। बट हाँ, उसने खुद से प्लांट किया है, वो किया बच्चे, वो दैट इज उसकी ही अपनी पर्सनल थ्योरी है ना, वो नहीं पता चल पाएगा। और बॉडी का पार्ट का कौन से बॉडी पार्ट का है वो नहीं हमें पता चल पाता कि अगर ब्लड सैंपल है, ब्लड सैंपल से थोड़ी पता चलेगा कि कौन से बॉडी पार्ट का है वो। अगर हेयर सैंपल है तो हेयर से पता चलेगा कि वो लाइक प्यूबिक हेयर है, ओके, या फिर स्काल्प हेयर है, ओके, या आईब्रोज है, आईलैश है, जो भी उससे पता कर सकते हैं। ओके ओके, क्लैरिफाई हुआ या कुछ और डाउट है? यू कैन आस्क। सर। नो सर। आस्क बच्चे, कोई भी बच्चा किसी भी तरह क्वेश्चन यू कैन आस्क मी, हिंदी और इंग्लिश बोथ, इन बोथ लैंग्वेज। ओके, डोंट बी हेजिटेट। अभी मैं आपके लिए कुछ कहानी बची हुई रखी हुई है मैंने, एज अ क्राइम सीन ऑफिसर मैं आपको कुछ बताऊंगा कहानी, जो स्टोरीज है मेरे पास। सो आई विल एक्सप्लेन, जो हमने काफी रियल लाइफ सिचुएशन में देखते हैं, और एज अ स्टूडेंट आपकी बहुत क्यूरियोसिटी होती है जानने के लिए। एनीवन एल्स, किसी तरह क्वेश्चन हो रिगार्डिंग एनी टॉपिक और क्राइम सीन और इन फॉरेंसिक और इन सर एनी एक स्ट्रीम ऑफ द फॉरेंसिक? यस। सर आपने बताया डाइवर्ज पूल और उसके लिए कि अगर किसी सेम कास्ट में अगर शादी होती है बच्चे होते हैं देन म्यूटेशन हम्म। अकर होता है, राइट? सो सर जो हम्म। डाउन सिंड्रोम वगैरह होते हैं, टर्नर्स एंड डाउन, हम्म। वो भी इसी हम्म। रीजन की वजह से होता है ज्यादातर, क्योंकि मैंने वैसे भी देख रखा है कि लोगों में डाउन सिंड्रोम नॉर्मली भी होता है। एक्चुअली डाउन सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम इज ड्यू टू दी रिकॉम्बिनेशन फेलियर। ओके। जैसे कि एक्स एक्स बाई और एक्स बाई बाई, और वी कैन से एक्स नॉट एक्स मीन्स एक्स नॉट बाई, ऐसा कोई कॉम्बिनेशन अगर बन जाए, एक्चुअल में कॉम्बिनेशन कैसा बनेगा, एक्स एक्स बनेगा या एक्स वाई बनेगा ना। बट ड्यूरिंग द सेक्स क्रोमोसोम रिकॉम्बिनेशन जब होता है बच्चे, उसमें क्या होता है, कोई एक्स्ट्रा जीन उसमें ऐड अप हो जाता है या कोई उसमें जीन डिलीट हो जाता है। या तो उसमें दो कंडीशन होगी, इफ देयर इज एक्स क्रोमोसोम, अगर उसमें एडिशन होगी एक्स क्रोमोसोम की, मीन वो क्या हो जाएगी उसकी प्लाइडी ट्राइसोमी वाली, एक्स एक्स बाई, देन इट विल लीड टू दी फीमेल कैरेक्टर। ओके। अगर उसमें बच्चे क्या होएगा, एक्स को डिलीट हो गया और ओनली बाई रह गया, तो उसमें क्या, अगर वो फीमेल है और उसमें बाई कैरेक्टर आ गया, ओके, एड अप हो गया, कोई रिसेसिव कैरेक्टर आ गया, देन इट विल लीड टू दी लाइक मेल फीचर्स उसमें आ जाएंगे। बट म्यूटेशन का जो होना, हाँ, एक रीजन है कि जो जीन पूल है ना वो कन्वर्ज होता जाता है। जितनी उसको रिकम्बिनेंट फैक्टर चाहिए, जितने उसको रिकम्बिनेंट चाहिए होते हैं उतने उसको रिकम्बिनेंट नहीं मिलते। इस करके क्या होता है, जो डीएनए होता है ना वो अपने आप को अलाइन नहीं कर पाता, जो रिकम्बिनेंट्स बनते हैं नो डीएनए में जो क्रोमोसोम होते हैं वो अलाइन नहीं कर पाते, क्योंकि उसकी भी एक मेमोरी होती है। जैसे आपको पता है ना कि जैसे हमारी बॉडी में कोई एंटीजन जाता है तो हमारी बॉडी में उसके मेमोरी सेल्स होते हैं, वो उस एंटीजन को पहचान लेते हैं दोबारा से, उधर उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज पहले ही बना करके रखते हैं। सो बच्चे इन द सेम वे, जो जीन्स होते हैं उनकी मेमोरी सेल्स होते हैं, उनको पता होता है कि पहले के जो रिकम्बिनेंट है, जो मीन्स प्रायर एंसेस्ट्री से कौन सा वाला हमारा चलता आ रहा है रिकम्बिनेंट, देन वो ट्राई करता है, जीन्स जो होते हैं वो ट्राई, सेल जो ट्राई, क्योंकि सेल ही होता है ना ये, और कुछ नहीं होता है, सेल से ट्राई करते हैं कि नया रिकम्बिनेंट बनाने के लिए। बट जब उनको कोई ज्यादा स्पेस नहीं मिलती, देन उसमें कुछ पॉलीगैमी, ट्राइसोमी या फिर ऑटोसोमी, उसमें ऐसी कोई कंडीशन आ जाती है, and it will lead to the some genetic disorder like
डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम। बट डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम काफी बेसिकली नॉर्मल भी है अगर रिकम्बिनेंट, क्योंकि बच्चे आजकल का क्या है ना, हमारा फूड भी सही नहीं है। लाइक ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी या फिर वी कैन से जब कंसीविंग का टाइम होता है, उस समय क्या है ना, उस समय इतनी हेल्थ भी अच्छी नहीं होती मेल और फीमेल पार्टनर की। ओके, एंड ड्यू टू दैट ये वाले सिम्टम आ सकते हैं। मींस देयर आर लॉट ऑफ कंडीशंस आर देयर इन पॉपुलेशन जेनेटिक्स। वो बच्चे एक पॉपुलेशन जेनेटिक्स का पार्ट है कि अगर हम सेम उसमें सेम जीन पूल में अगर शादी करते हैं और उसके बच्चे, देन एक किसी ना किसी टाइम पे आकर के म्यूटेशन आने लग जाएंगी। म्यूटेशन चाहे तो उसमें फ्रेम शिफ्ट होगी या प्योइंट म्यूटेशन होगी, देन इट विल नॉट लीड टू द डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम। किसी और तरह का भी हो सकता है जो अभी आज तक कभी स्टडी नहीं किया कर पाए हम। ओके, कोई न्यू रिसर्च भी हो सकती है। क्लियर? तो वो डिफाइन नहीं हम कर पाते, उसको डिफाइन नहीं कर सकते कि वो किस करके हुआ है। जेनेटिक जो होता है, अब आप देखो कैसे, एक सिंपल एग्जांपल है ना कि जैसे चलो फॉरेनर्स लगा लो, अमेरिकन नॉट इंडियंस, जो अमेरिकन नॉट अमेरिकन, कोई भी फॉरेनर लगा लो जहाँ पे नहीं होती, जहाँ पे ज्यादा कास्ट वेस्ट नहीं चलता है ना इतना, तो वहां पे देखो कि कितना अच्छा भी बच्चे भी कितने स्मार्ट होते हैं या फिर काफी इंटेलिजेंट होते हैं, एंड दैट इज ड्यू टू दी दैट पार्ट ऑफ द वी कैन से बिकॉज दे आर सिलेक्टिंग देयर वी कैन से पार्टनर, लाइफ पार्टनर बाय देयर ओन चॉइस। ओके, दे आर नॉट गोइंग टू दी कास्ट के सेम कास्ट का होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, वैसा नहीं होता है। ओके, क्लियर? मैं जितना जीन पूल डाइवर्ज होगा ना, उतनी ज्यादा उसमें म्यूटेशन के चांस कम होंगे, लेकिन जितना ज्यादा कन्वर्ज होएगा उतनी ज्यादा वो क्या होते जाएंगे बच्चे, जीन पूल रिस्ट्रिक्ट होता जाएगा। एंड देयर आर लॉट ऑफ वी कैन से चांस ऑफ म्यूटेशन। वो ऐसा भी नहीं है कि आज के आज ही म्यूटेशन हो जाएगा, उसको कई साल भी लग सकते हैं। ओके, एंड उसको आज के आज भी हो सकता है। तो डिपेंड करता है ऑन द सिचुएशन एंड द टाइम। Okay, sir. हाँ, ओके। एनीवन एल्स? एनीवन एल्स? किसी भी तरह क्वेश्चन हो बच्चे, यू कैन नॉट बी हेजिटेट। और समझ आया सभी को? प्लीज रिप्लाई। फर्स्ट सेशन था, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, आई कैन अंडरस्टैंड। ओके, बट फ्लो बन जाता है उसके बाद। इफ यू आर कंफर्टेबल एंड यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन। Okay, so if you don't have any further questions, so we conclude this session. So thank you so much, sir, for such an informative and insightful session. We truly appreciate your valuable time and guidance. Thank you all the participants for joining today's session. We will continue the remaining part of today's session tomorrow. With this, we conclude the today's session and have a great evening ahead. See you in the next session. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you, ओके, sir. थैंक यू सो Thank मच। you, Thank you, sir. sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. ओके, मोस्ट वेलकम बच्चे। ओके, हैव अ ग्रेट नाइट, नॉट डे। बाय।